थका मैं हारा मैं गया छोड़ दे सपना सब कुछ मैं बदला पर बदला ना भेस अपना लोग मांगे व्यूज मैं करूँ ड्रीम चेज अपना भूल जाऊं कुछ भी पर भूलूंगा ना फेस अपना खेलू स्पोर्ट्स भरोसा ना मौत पे खुद ही लगाई मरम मेरी लगी चोट पे बड़ा था स्ट्रीमर और लोग सारे डोबते हेटर आए चैट में तेरा भाई फिर भी टॉप पे साथ चले मेरे वो रिश्ते गहरे बदल गए खास वाले साथ और यारे गहरे बदल गए दो है फेस वो आते कर शफल रे जब पाया मैं टॉप पे तो सबके चेहरे बदल गए बदले थे ढंग उनके बदले अंदाज बोलते हैं वो दे दो एक और बस चांस बदली सी लग रही थी उनकी आवाज और आंखों में दिख रहे थे उनके सब राज ड्रीम करे वो सब मेरे है पास वो भूल गए गेम मेरी मेरे सब साज इतने ही सालों से किया बर्दाश्त अब माफी उन सबको जो मुझसे नाराज मेहनत है जारी चाहे दिन हो या रात अब तेरे से ज्यादा मेरी है बात वो चलते हैं चाल मैं देता हूँ मात वो घूम रहे गोल गोल बना रहे हैं आर्ट सोचू ना ज्यादा ऊपर बैठा है रब सीधा है रास्ता मैं रुक रहा नहीं अब so much problems तो मैं भी हूँ टफ ना काउंटर हुई मेरी फिर भी 10K प्लस अब फैन मेड वीडियोस भेजते हैं लोग वो कर रहे हैं अपनी मैं खुद की कर जॉब डे बाय डे लोग जल रहे हैं बहुत पर उनकी नहीं गलती मैं बचपन से होट लाइफ बहुत टफ लोग चाहते आसान खुद से कुछ करना नहीं कर दो एहसान इन्हीं सब बातों से हुआ परेशान तभी चलूं मैं आगे पीछे मेरे निशान 1 by 1 मैंने पूरे की ड्रीम सुबह करूँ जॉब तभी रेगुलर है स्ट्रीम कॉल मी अ लेजेंड कॉल मी स्प्रीम 1 मैन आर्मी मैं खुद ही हूँ टीम लक पे डिपेंड नहीं मेरा फ्यूचर मेरे हाथ में खुद ही कमाए व्यूज गया नहीं था चाटने दिन में करूँ जॉब और स्ट्रीम करूँ रात में और आएंगे गाने क्योंकि गैवी मेरे साथ में काम मेरा प्राइसलेस को लगता नहीं दाम प्राइम हूँ मैं खुद ना बंदा हूँ आम सोते थे तुम जब मैं करता था काम मेरा तभी आ जाए देख लेजेंड्स में नाम What's up, everybody? Welcome to the grand finals of Battlefield Bloodbath. क्या हाल है guys? कैसे हो सब? How's it going? Guys, before any further ado, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी टूर्नामेंट के बारे में बातचीत करने से पहले हम लोग ने एक चीज सोचा था कि हम लोग शेड्यूल पे स्टिक करेंगे शेड्यूल पे स्टिक होते होते ही आज का मैच चालू हो गया है ऑलराइट गाइस आज का मैच ऑलरेडी चालू हो गया है एंड गाइस जो भी ट्यून्ड इन है 2 मिनट का हल्का सा डिले है मैं बस पहले पिन कर दो रुको पहले मैं बस कुछ हल्का सा कर रहा हूँ ये हर टाइम मुझे एक इशू देता है और मुझे ये इशू सॉल्व करना थोड़ा सा नहीं आता है मैं मेरा कर्सर कैसे लाऊं हर्षल F1 आ गया हाँ अच्छा हाँ परफेक्ट रॉकेट का भी स्ट्रीम शुरू हो चुका है बढ़िया है ऑलराइट वो प्लेन पाथ दिखाओ मतलब दिखाओ मैप वेब दिखाओ मुझे साउंड नहीं आ रहा है वो तुमने बंद करके रखा था ना ओ हाँ यू आर राइट एक्चुअली एंड परफेक्ट एक बार स्ट्रीम पर दिख जाए गाइस स्ट्रीम पे जो भी ट्यून्ड इन है एक बार वंस डिले एंड्स वंस सब कुछ एंड करता है तुम लोग की तरफ से मुझे बताना अगर सब कुछ सही चल रहा है मैप देखते ही देयर इज तुम हाँ एक वर्ल्ड व्यू है ओके एंड देन तो मैप पे भी तुम किसी भी प्लेयर पे क्लिक करोगे ना तो सीधा तुम स्पेक्टेट कर पाओगे मतलब मैप खोलो जो पहले बताना था बट मैं भूल गया अभी करो किसी पे भी क्लिक करो हाँ देन नीचे देखो स्पेक्टेट आ गया ओके ओके समझ गया गाइस टूर्नामेंट के वक्त ही थोड़ा कास्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स मिल रहा है वो भी मेरे से वो भी हमारे प्रोफेशनल कास्टर हर्षल से अरे अभी देखो सामने पे जो प्लेयर दिख रहे हैं ना वहाँ पे भी उस पे भी क्लिक करोगे तुम तो सीधा उस पे जाओगे मतलब वो मैप खोलने की जरूरत नहीं पड़ा हाँ देखो हाँ
यप देखो। ओके एंड देन ये चेंज करके एक ऑप्शन है ना नीचे, वहाँ पे था नीचे। हाँ बताओ। चेंज Change. करके ऑप्शन है देखो। यप यहाँ से देखो ये नियर बाय एंड ओवरऑल में सब टीम्स नेम के थ्रू यहाँ से कर सकते हो तुम, मतलब नाम लेके Understood. हाँ ऑलराइट, इससे तुम काशी ट्यूटर एंड हो गया है। आई थिंक और कुछ जाने की जरूरत नहीं है अभी के लिए। सारी टीम्स अलग अलग है, बस सी गुड, डब्ल्यू जेंटलमैन ओपी एंड ये भूगी मैन और गोस्ट पास में है थोड़े से, बट सब लोग अपना अपना आराम से लूट कर रहे हैं। नो रियल फाइट्स एज ऑफ नाउ। हर जगह लोग थोड़ा सा डिस्टेंस पे अपना लूट ले रहे हैं। अराउंड 6 टीम अभी सर्कल के अंदर है, बाकी सब बाहर है। बट यहाँ पे जो पेन है वो थोड़ा सा एक जगह पे प्रोन्ड है, रुके हैं रेंडर होने के लिए। उसको बंदे दिख रहे हैं आजू बाजू, ही सीज एन एंटायर स्क्वाड। उसको पता है कि सामने टीम नंबर 7 पड़ा है, ही जस्ट वेटिंग कैजुअली। उसके पास एक यूएमपी है, उसके पास एक मिनी है। एक फाइट हो रही इशवांग की टीम की। गाइस देखो, स्टार्टिंग में फर्स्ट गेम में थोड़ा सा फाइट्स मिस हो सकता है। अगर फाइट हो रही है तो इंस्टेंट स्पेक्टेट कर सकते हैं। कर सकते हैं। ये सब के दौरान आई थिंक एवी इज ऑल्सो इन द मिड्स ऑफ समथिंग। ये भी बस लूटे जा रहा है, आजू बाजू बस लोग हैं। आई थिंक ये रेड एक्स की टीम है ना, उनकी फाइट चल रही है ऊपर ऊपर, मतलब एवी के ऊपर थी। एवी के ऊपर वाले देखो, इशवांग का ना एवी के ऊपर यहाँ पे ना। वाले हाँ उनको स्पेक्टेट किया हाँ। उनको। ऑलराइट सॉरी गाइस, मुझे एक मेरे कान फट जाएंगे, तुम लोग के कान भी फट जाएंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि सॉरी। हाँ मतलब गाइस थोड़े बहुत गोलियां चल रही है अभी तो। पहला सर्कल है 4x के साथ देखते हुए फरहान इज जस्ट ट्राइंग टू स्पॉट सम प्लेयर्स। आजू बाजू अभी कोई नहीं, उनका एक प्लेयर नॉक्ड है। क्या वो एमवीपी को बचा पाएंगे? टेक सम टाइम, जाएंगे। स्मोक्स फेंक रहे हैं ताकि आराम से एक इजी कवर मिल जाए। यहाँ पे ऑलरेडी एक दूसरा फाइट चलते हुए, बस रेंडर होने में टाइम लग रहा है। एज फीनिक्स एंड मोमेंट में बस दिखा, बट रेंडर नहीं हुआ। एज फीनिक्स ने एक बंदे को मार दिया है। आई थिंक दैट वाज ऑलरेडी अ फिनिश्ड ऑन हिज एंड। फीनिक्स के पास 2 किल, आनंद के पास 1 किल, पेन के पास 1 किल। 1 फुल स्क्वाड वाइप ऑलरेडी आ चुका है ये गेम में। एंड हाँ, द वर्ल्ड व्यू है ना जो वहाँ पे लगा है, उसका तुम रोटेट लाइक कैसे कैसे बताओ, जीटीआरबी का फर्नीचर कैसे तुम ऊपर नीचे करते हो, हाँ सेम वो वर्ल्ड व्यू उस पे क्लिक करके। ओके, 1 मिनट में आ रहा बस। हाँ गाइस, स्पेक्टेटिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम स्पेक्टेटिंग बीजीएमआई इन माय लाइफ। अभी से ही थोड़ा सा बोल रहा हूँ, तो कभी कभी कुछ ना कुछ फाइट्स मिस हो सकते हैं। एंड गाइस हाँ, एक चीज़ तो लगाना भूल गया मैंने, वो था ये। हाँ अब अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है, अब सही सा लग रहा है पूरा। सीधे अटक रहा है, धीरे धीरे आई थिंक ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा सा चीज़ें रेंडर होने दो। सर्कल के अंदर वी कैन सी फ्यूचर एक्स एंड टीम एक गाड़ी में सीधा अंदर आ रहे हैं विद वोल्ट एवी। आराम से रोमिंग अराउंड राइट नाउ। आजू बाजू इतने ज़्यादा लोग हैं नहीं, कौन सा क्लैश मिलने देख सकता है। गोस्ट का टीम अंदर आने वाला है सर्कल में। अभी सर्कल के बाहर काफी टीम्स है, काफी स्प्लिट अप है अभी के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी टीम एकदम क्लोज है। there's no team that is really close for battle. किंग्स आराम से लूट के सर्कल की तरफ आने वाले हैं विद हील्स विद एवरीथिंग। बट यहाँ पे क्या पता, एवी एंड टीम, इट कुड बी पॉसिबल कि टीम WT के वो आसपास चले जाए। WT आर ऑल्सो इन व्हीकल्स। टीम WT थोड़े आजू बाजू ही घूम रहे हैं अभी के लिए, and they're trying to figure out where they can get cover, where they can be safe. हर चीज धीरे धीरे देखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। Shots have been fired, positions have been revealed.
आई कीप फॉरगेटिंग ये व्यू से भी हो सकता है चेंज। यहाँ पे टीम WT के 3 लोग आजू बाजू है अभी के लिए। स्कोपिंग इन, डिऑक्सी देख रहे हैं कि कौन से हिल पे, कौन से रिच पे, कौन से क्लिफ पे या तो एवी या तो ब्लेज या तो फ्यूचर एक्स मिल जाए। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल आउट हियर। इन द मीनवाइल आराम से बिल्डिंग के अंदर कवर लेते हुए, गाइस बुरा मानो अच्छा मानो, थोड़ा कास्टल बाइस ये टीम के लिए रहेगा क्योंकि ये हमारा होम टीम है। बट इन द मीनवाइल वी हैव डेमीगॉड एंड हिज टीम जिन्होंने एक स्क्वाड वाइप ऑलरेडी कर चुके हैं। विद दैट स्क्वाड वाइप वो देख रहे हैं दूर 3x स्कोप के साथ कि कोई टीम आजू बाजू है कि नहीं। एज ऑफ नाउ ही स्पॉट्स नो वन। मैप पे देखते हुए एक फाइट चल रहा है ऑन द साइड लाइन्स एज वी हैव टीम 15 इनसाइड द जोन, ब्लू सर्कल इन। यहाँ पे ब्लू जोन के अंदर एक फाइट होने वाला है। उसने स्पॉट किया है शायद से एक बंदा रिच को। गोलियां चल रही है, फायरिंग द 3x, क्लिपिंग हिम अ लिटिल बिट, पर अभी उसको थोड़ा सा जाके हील करना है। लेफ्ट से बहुत डैमेज पड़ चुका है इसको। इन द मीनवाइल गाड़ियों पे गोली चल रही है। द पर्सन इज फॉलिंग डाउन टू 1 शॉट इन हेल्थ। ये ब्लू जोन से एक्चुअली मर सकता है बट बैंडेजेस विल कीप हिम अलाइव। ही इज ड्राइविंग अवे, सेंड इट कर रहा है सीधा ब्लू जोन के अंदर, बट उसका टीम अभी भी उधर ही है सर्कल के अंदर इनटू अ बगी, ट्राइंग टू फाइंड अ वे इन, ट्राइंग टू फाइंड अ वे टू गेट इनसाइड द ब्लू जोन। अभी उनका टीम बस अकेले है, नोबडी नियर देम, ऑल सेफ, ऑल साउंड एंड राइट नाउ नो मेजर कैजुअलिटीज। कैजुअलिटी से बात करते करते यहाँ पे बहुत सारे टीम्स आजू बाजू ही है। शॉट्स आर बीइंग फायर्ड, आनंद इज एट 1 HP, he is getting shot a lot of bullets, he has to go to safety, has to apply a first aid kit, has to heal। बस थोड़ा सेंडेड करके अभी के लिए बच गए हैं। he's made sure कि he's safe, he's sound, कुछ दिक्कत ना हो, and has come just to ensure that he lives to fight another day। यहाँ पे हमें बहुत एक्शन मिलने देख सकता है। वी हैव स्पार्टन एंड हिज टीम, फ्यूचर एंड हिज टीम, डिऑक्सी एंड हिज टीम एंड पेन एंड हिज टीम ऑल क्लोज बाय। Guys, everyone who's tuning into the stream, don't forget to like, don't forget to subscribe. This is the first time actually the second time a BGMI tournament has been hosted, and we have Deoxy. He's looking in, he's checking the 4x था कि 6x था। Guys देखो इतना भी नॉलेज नहीं है मुझे, but ठीक है। Everyone is looting, everyone is trying to find cover। यहाँ पे no real battles coming in, but यहाँ पे हो सकता है as 2 teams are closing in। Berlin vehicle is smoking, he's on foot as of now। गोलियां तो पड़ रही है, उसको कवर ले रहा है एंड ट्राइंग टू फाइंड अ वे ताकि वो बस सेफ रहे, वो एंगल ले पाए एंड प्रोबेबली एक काउंटर अटैक कर पाए। इस व्हीकल इज हेवीली डैमेज, और व्हीकल में फिर से बैठने में दिक्कत हो सकती है उसको। इन द मीनवाइल 1 HP, Jatin Noob just surviving, has to prone, has to put another first aid। He is on the cliff, he is safe as of now। Is he going to get pushed? Right now Maz and Raghav inside a bus, trying to spot someone, trying to go in, trying to find more kills. They're trying to get more squad kills out here। In the meanwhile, another circle has closed in. Teams are closing in together, and right now we might see Sahil and his team in the midst of a fight। Sandstorm आ चुका है यहाँ पे, as good as a flash grenade। यहाँ पे इनका विजन कॉम्प्रोमाइज हो गया है। देखो गाइस, डे 1 ऑफ द फाइनल स्पेक्टेटिंग इज गोइंग टू बी लिटिल हार्ड। डे 2 में आदत लग जाएगी, ठीक है। रोहित चेकिंग हिज कॉर्नर्स, चेकिंग एवरी एंगल, हैज 360 विजन राइट नाउ। बस देख रहा है कि एक बंदा स्पॉट हो जाए, ही कैन प्रोवाइड हिज टीम सम इंफॉर्मेशन, ट्राई टू पुश इनटू द एरिया एंड गेट सम मोर किल्स। यहाँ पे
TS Man Cypher, Buggy May trying to go left and right, trying to avoid the pain. In the meanwhile, we have Deoxy and his team. Scoped in, spraying, almost getting a kill. Killer really low on health points. We have Team WT Divine going for a push. They've slammed into the area. Fights have been already coming in. Spray coming in with the UMP. He's coming and changing his gun, falling to 1 HP. Still pushing in, getting ahead. Divine takes down 1 kill. In the meanwhile, his team on the midst of the other line. We have Killer Smith instantly trying to go for a sneaky revive, trying to help his team out. But does Divine know about this? Divine using his first aid, going to help his teammate on the other side. We have PasKaLL just scoping in at a distance. Divine looking for more kills. Spots 1 with the UMP, tries to spray him across. Sees another, scopes in, but gets backstabbed instantly. He could get finished, but Spartan on the other hand is reviving. Divine completely finished, but Deoxy in the other hand, will he be able to take revenge? It's Deoxy and PasKaLL going to go in and going to see if they can take revenge for his team. Pushing into the building, spots 1, takes him down, sprays ahead, trying to get another kill, pushing in with the full W gameplay mentality, trying to spray in, goes for the second, but instantly gets shot down. Is that an entire squad wipe coming in? If I'm not wrong, they are a really strong team. Taking an early exit in game number 1, map number 1 might be slightly disheartening for them. Spartan on the other side with his team, feeling very happy, feeling very comfortable. They have 8 kills to their name, 8 kills. With those 8 kills already in game number 1, an entire squad wipe to their name. I think Team 6 are really going to be happy at this point. They're going to be really satisfied with the way this game is currently going out. Sahil scoping in, shooting someone, but I'm waiting for things to render क्योंकि यार PC जितना भी अच्छा हो, थोड़ा सा potato चीजें होते हैं. We have Jatin Noob roaming around the vicinity. Rohit and Gyro God in a vehicle. And we had a fight going on somewhere. Alright, Vibe in the end and his friend out here trying to spray. Already have 6 plus 2, 8 kills to his name. In the meanwhile, Spartan in a smoking car getting shots. His vehicle can explode. He has to go to safety. He has to. His vehicle is on fire. A few more bullets can cause his vehicle to instantly explode. He hops out the vehicle, throws in the area and just gets into slide cover. Smoke karte hue, getting safety. He has 4 kills to his name already, but he needs some cover. यहाँ पे वो बहुत angle से exposed है. But now he finds a place covered by 4 brick walls. Getting pushed by Vibe in the end. Trying to find an angle. Trying to find a space. Hops out of the car. Sprays Volt AV. Putting him down to half HP. Taking cover. Volt AV. Tries to spray him down. But Vibe's in the end with a wonderful scope and straight up goes. But Devil giving his cover fire on the side. There is so much crossfire happening out here. Web's hero also goes down. We have Blaze in the other seat. Spotting more and more players trying to get a kill. 1 HP on Alex, and that could be a squad wipe. They have only 1 player alive. That is Alex, who is very, very low on health and future, and his team secured an entire squad wipe. A lot of action coming into this game. They might be approached by another team. They might be getting third-partied. Blaze
He knows there are people there. He is going to go for some kills. He spots people. He gets shot on. He is in the midst of a battle, spraying and spraying, trying to get some kills, but gets taken down instantly. Alex is down. Gentleman hoping, going for the revive. Blade running towards his team, going to help him out. Might just run over some people, but decides not to. But as Seagod sits in the buggy, goes in for some safety. Spray and pray through the smoke, but unfortunately it misses. A nade is being clocked, throwing in the smoke, trying to just get some cover into the area. Spartan in the meanwhile, the sole survivor, just being cautious. He is not making any risky plays as Devil in the buggy, smoking as hell, but he is just walking in. King's Musketeer dies via the play zone as Vic on the other end takes down Swaraj. Sin Devil, he does not know uske baaju mein ek banda hai. He gets off and instantly Spartan with the 5th kill takes him down. Maar ke he instantly finds an angle and gets down to safety. Zone अभी बहुत छोटा होने जा रहा है guys, बहुत छोटा होने जा रहा है. There's gunfight everywhere and spectating is getting harder and harder. We have Sahil using a medkit, trying to get up, trying to get safe. A nade nearly missing. He has to get full HP. In the meanwhile, we have Quadri taking some position. Guys, मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा expected कैसे करूँ, but still, I'm trying my best, okay? We have Spartan holding the zone. Shots coming in from everywhere. Sahil and his team, Jatin, in the smoke, in a van. They are exposed from all corners. The zone is closing in. Not too many teams left. The next battle is going to come this way, I feel. As we have Vic, who might spot a few players, but is not taking any shots. Okay guys, थोड़ा सा spectating में मुश्किल पड़ रहा है. I'm not gonna lie. Spartan in the meanwhile holding an angle on the sidelines. Vic using a nade. He knows there are people in front of him. He is getting shot from the right. Instantly gets knocked while a nade was locked in his hand. His team is right next to him, providing him some backup. फ्रॉस्ट इंस्टेंटली रिवाइव कर रहा है, पर उसको ये नहीं पता कि शायद से स्पेक्टर एक एंगल ढूंढ के पुश करने की पूरी कोशिश कर रहा है. हर रॉक पे, हर कोने पे छुप के आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा है. इन द मीनवाइल दूसरी साइड पे विक एंड हिज टीम, दे आर लुकिंग एट कॉर्नर्स. हर कॉर्नर में कुछ ना कुछ चेक करके देख रहे हैं कि कैन दे गेट अ फ्यू किल्स. सौम्या गोइंग टू स्पॉट ऑन हाइपर, स्कोप्स इन, स्प्रेज हाइपर 1 HP पे बिल्डिंग के अंदर जाते हुए. Meanwhile, Spark just roaming around the vicinity of his team. Hyper, उसकी टीम मर चुकी है. नेड आ रहा है आजू बाजू से, स्प्रे आ रहे हैं आजू बाजू से. There is no way they can run. Molly फेंका गया by Fox. Fox is going to push in. Fox is going to try to spray. Falls back slightly. थोड़ा सा सेफ्टी लेके वो वापस आया है. बट हाइपर उसको पता है कि वो सब कोने में आ चुके हैं. क्या उसके पास कोई जगह है जाने को? इन द मीनवाइल द मोस्ट डोमिनेंट टीम राइट नाउ एज पर आई सी 7-5-4-2. Man, that's almost 18 kills if I'm not wrong, playing very safe. Phoenix pushing in slowly, using smokes, cover लेते हुए. Team FTOX spraying on Krypton बहुत कम डैमेज लेते हुए takes down one. Krypton on the other hand, he's spraying, he's trying to get some kills, he's trying to find safety. Smoke के अंदर थोड़ा सा कवर होने की कोशिश कर रहा है. उसको गाड़ी दिख गया है, गाड़ी को डैमेज करते हुए trying to figure अगर वो गाड़ी को फोड़ दिया, he can get some of the other assistance. He spots Anand, takes Anand down. One knock, almost gets traded. Very low in HP, एक फर्स्ट एड के लगाते हुए, but राइट से Krypton को पड़ गई है गोलियां. आनंद जो नॉक था गेट्स रिवाइव. डेमीगॉड शायद से उसको पता है कि बंदे किधर है. वो जोन के बाहर है. जोन इज चिपिंग हिम ऑफ. ही इंस्टेंटली गोज डाउन.
We have Fox on the other side. Fox, Noorman, Jatin OP, 1 HP. Danger on the other side, pushing in. Danger's going to spot someone. Danger spots someone on the left. He's going for the push. और क्या उसने फिनिश हो गया मैच. Guys, before I could spectate, the match has come to an end. And guys, जो भी tuned in है, just to let you know, अगर तुम्हें नहीं पता है about the finalists of this tournament, we have a lot of teams, the group stages, semi-finals, जीत कर, points पा कर, they have come into this tournament, into the finals, to win a total prize pool of 15,000 rupees. ये लास्ट जोन में बिफोर आई कुड नोटिस क्या हो रहा है पता लगने से पहले ही वो मैच खत्म हो गया था, तो यार थोड़ा सा इधर उधर हो गया. लास्ट जोन में ना वो कर लेना, मतलब वो वाला व्यू लगा लेना. ऊपर नीचे कैसे करूँ उसमें, मुझे क्लिक करने के बिना WSD पता नहीं वो नहीं हो रहा था ढंग से. ये स्क्रीन ये कर दो, विनर विनर वाला लगाना. कोई ना, फोटो लगा दिया था. वैसे ये मेरे लिए है. ओके ओके. हाँ हाँ ये मेरे लिए. हाँ अच्छा अच्छा. तो गाइस अभी फाइनल्स है. फाइनल्स में बहुत सारे गेम्स होने वाले हैं. डे 1 है, डे 2 है. डे 1 पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 या 3 गेम है. तीन या 4 गेम है इफ आई एम नॉट रॉन्ग गाइस. यस, देयर 4 मैचेस टोटली ऑन डे 1 एंड हर टीम अपने लिए हर मैच में पॉइंट्स इकट्ठा कर सकते हैं. एंड वो पॉइंट्स पाने के लिए किल्स ले सकते हैं, स्क्वाड मार सकते हैं, पोजीशन ले सकते हैं. हियर इज द पॉइंट्स टेबल एंड ये पॉइंट सिस्टम के हिसाब से पीपल विल गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉइंट्स जो धीरे धीरे अक्यूमुलेट होके होते टीम ग्रैंड फाइनल शायद से जीत भी सकती है. आज टोटली गाइस दे आर गोइंग टू बी टोटल ऑफ 4 मैचेस. 4 मैचेस होंगे आज. चारों मैचेस के मैप्स अलग अलग है. वी हैव मैप 1 एट मिरामर, मैप 2 एट सैंडहॉक, मैप 3 एट विकेंडी एंड मैप 4 माय फेवरेट मैप रैंगल. और लोग पूछ भी रहे होंगे यार कि यार मतलब यार प्राइस पूल 15,000 है, पर वो 15,000 यार मिलेगा किसको? क्या फर्स्ट प्लेस को मिलेगा, सेकंड प्लेस को? कैसा कैसा क्या सीन है उसका? तो इट्स सिंपल गाइस, प्राइस पूल का एक डिवीजन है. It's 6,000 for the winner, 3,000 runner up, 2,000 second runner up, 1,500 fourth position, 1,000 for the 5th position, and of course एक बंदा who's going to be the tournament MVP. He'll get 1,000 rupees only for himself. So guys, before we hop into the next game, you guys can view all the data. देखते रहो कि कौन सा टीम्स है, पॉइंट सिस्टम कैसा है, कौन से मैचेस है, प्राइस पूल क्या है, तुम सब देख सकते हो as we take a small break.
हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, मैच 1 के बाद वी हैव कम टू अ स्पेस जहाँ पे हमारा पॉइंट्स टेबल अपडेट हो चुका है। हमें अब पता है कि हु इज लीडिंग, कौन फर्स्ट पे है और किसको रिकवरी मोड में जाना पड़ेगा ताकि वो एक ग्रैंड फाइनल जीत पाए। हमें लगा अरे ये ऐसे क्यों आ गया, बट यस ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं भाई, जिंदगी में दर्द है तो दर्द है, कुछ कर नहीं सकते दर्द का, है ना। तो गाइस द पॉइंट्स टेबल आफ्टर गेम नंबर 1 आपके सामने। टीम हंटर्स हैव टेकन द फर्स्ट चिकन डिनर। बट चाहे उन्होंने चिकन डिनर तो ले लिया है, जो आई है रेड एक्स लेगेसी, they are leading the table, 19 finishes, लोगों को मारा है उन्होंने, एंड मारने के बाद दे फिनिश 4th, securing a total of 23 points for the team. 23 points guys, making Red X Legacy the number 1 team after game 1. Team Hunters का है 6 finishes, 16 points on the board. Team 40N with 1 point less at 15 points. Second आते हुए ही बहुत पॉइंट सिक्योर कर लिए उन्होंने। बाकी अगर देखा जाए तो कोई और टीम डबल डिजिट में नहीं पहुंची है। कैपिटल लेटर्स, YB Sports at 9 and 8, Team Solid at 6, Gen 1 Akatsuki at 5, Ignition at 4, Fnatic at 3. We have 2 teams at 3. We have Inferno Dragons at 2. Anath Gang at 1. Team was taken at 1. And the other teams at 0. तो अभी के लिए मैप 1 के बाद Red X Legacy going in the 20s at 23 points. Hunter and 40 and yet a double digit. And rest everybody are going to be in recovery mode. गेम 2 का लॉबी बन चुका है। गेम 2 बहुत ही जल्द चालू होने वाला है एंड गेम 2 इज गोना टेक प्लेस इन सैनहॉक। आज टोटल 4 गेम होने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू गो इनटू गेम नंबर 2 वेरी सून एंड वेरी शॉर्टली। गाइस गेम नंबर 2 बहुत ही जल्द चालू होने वाला है। पता नहीं क्यों ये गेम 2 एक बड़ा सा टूर्नामेंट कॉल्ड बैटलफील्ड ब्लडबाथ गॉट टू यू बाय रॉकेट एंड माई सेल्फ। इट्स द ग्रैंड फाइनल्स राइट नाउ ऑफ दिस वंडरफुल BGMI टूर्नामेंट जहाँ पे टीम्स 15,000 जीतने की पूरी उम्मीद रख रहे हैं। एंड फॉर एवरीबडी ट्यूनिंग इन, तुम लोगों को पता है कि ये सब के बीच में मेरा को-कास्टर जो पूरा टूर्नामेंट दिखा तुम लोगों को, हर्षल, मुझे आरपी का चीजें पूछ रहा है डीएम में। क्या क्या बात कर रहे हो पास्कल भाई तुम? ओह माय गॉड, कब आई मीन यार ऐसी ना वो अगले स्ट्रीम के लिए है। यहाँ पे नो आरपी टॉक्स, या ये वाला स्ट्रीम पे नो आरपी टॉक्स। क्या पता कि ये जो टीम रजिस्टर किए हैं वो एक आरपी लोग हो ही ना, तभी भी वो स्ट्रीम देख रहे हैं, तो उनके लिए ये एक ओनली BGMI जोन रखते हैं।
यार It is what it is. गाइस नो आरपी टॉक्स ओनली बीजीएमआई क्योंकि हम आरपी नहीं खेलते अभी। हाँ, आरपी वारपी मोह माया है। नहीं तुम बोल रहे हो। आह, ठीक है, ओके। तो गाइस जो भी अभी अभी ट्यून इन कर रहे हैं टू दिस वंडरफुल टूर्नामेंट, तुम लोग को दिख रहा है पॉइंट्स टेबल, तुम लोग को दिख रहा है टीम के नाम, तुम लोग को ये भी दिख रहा है कि कौन सी टीम आगे है कौन सी टीम पीछे है। बट क्या तुम लोग को पता है कि वो ये पॉइंट्स, मतलब उनको ये पॉइंट्स मिला कैसे? हाउ डू दे इवेंचुअली रीच दीज पॉइंट्स? हियर टेक अ लुक एट द पॉइंट सिस्टम। फर्स्ट प्लेस गेटिंग 10 पॉइंट, सीधा 10 पॉइंट। फिनिश फर्स्ट, गेट अ चिकन डिनर, सीधा 10 पॉइंट मिल जाता है। सेकंड प्लेस को 6, थर्ड को 5, 4, 3 डिपेंडिंग ऑन योर पोजीशन, वो आ जाता है। एंड जैसे मैंने बताया गाइस, वी आर गोइंग इनटू डे 1 ऑफ द ग्रैंड फाइनल्स। एंड आज के दिन पे टोटल ऑफ 4 मैचेस है। 4 मैचेस, ऐसा नहीं है कि एक ही मैप होएगा, देयर आर गोइंग टू बी मल्टीपल मैचेस कमिंग योर वे। मैच 1 मेरा मैच ऑलरेडी हो चुका है। आफ्टर दैट हम अभी सैनॉक में जाएंगे, फिर हम वीकेंड ही पहुंच जाएंगे। एंड उसके बाद जो एक मैप मुझे पता है, बस एक मैप मुझे पता है, विच इज रैंगल, विल बी द फाइनल मैप ऑफ टुडे। अगर वही है यार, मतलब मैचेस तो है, पॉइंट्स तो है, बट जो 15,000 है द टोटल प्राइस पूल, वो एक ही टीम को नहीं मिलने वाला है। इट इज गोइंग टू बी स्प्लिट अमंग 5 टीम्स एंड एन MVP। एंड हियर्स हाउ। देखो गाइस, स्पेक्टेटिंग में थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है, बट हमारे जो मैनेजमेंट टीम है उन्होंने प्रोडक्शन पे बहुत मेहनत किया है, लेजिट। तो प्रोडक्शन टॉप टियर होएगा, कास्टिंग भी अच्छा होएगा, बट थोड़ा स्पेक्टेटिंग में थोड़ा झेल लेना यार, इतना बोल सकते होगा बस अभी के लिए होगा, बाद में वो भी हो जाएगा सही। मतलब एक दो मैच लगता है यार, हो जाएगा पास्कल भाई। वो तो मतलब अभी तुम्हें थोड़ा सा पता, लाइक आइडिया आ गया होगा कैसा है। बस अभी मैच शुरू ही होने वाला है। आई मीन शुरू हो चुका है। नहीं, शुरू तो नहीं हो चुका है, बट तुम लोग को नहीं पता है गाइस, हमें दिख रहा है वी हैव 67 प्लेयर्स हु जॉइंड द लॉबी एंड मैच इज अबाउट टू स्टार्ट गाइस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 15 सेकंड में चालू होने वाला है इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये मैच। तब तुम्हें पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। क्या चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या मैं गलत था? हो गया, हाँ हो गया। Alright guys, we are in day number 1, match number 2. Hopping into Sandhawk, loading into the game. देखते हैं अभी कौन सा टीम चिकन डिनर से क्या करता है, क्या हमारे जो ऑलरेडी टीम्स है लाइक रेड एक्स लेगेसी, लाइक टीम हंटर्स, लाइक टीम 40N, क्या वो अपना लीड अभी भी रखेंगे या कोई और टीम उनके आगे चले जाएंगे? टाइम विल टेल गाइस। एंड गाइस सुन तो लिया यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलो यार। 12 घंटा मत खेलो, 6 घंटे का वैसे भी BGMI खुद से चिपका देता है। यप गाइस, ओके हेल्थ का ध्यान रखा करो गाइस। सारे प्लेयर्स लॉबी में लोड इन हो रहे हैं। बस मैप ही रहने दो अभी, उनको पाथ दिख जाएगा। ऐसा मैप रहने दो, बस प्लेयर्स को छोड़ दो। ये प्लेन पाथ दिखेगा ना, फिर कैसे जा रहे कौन का उतर रहा है ना। बजर बच चुका है गाइस, प्लेन आ गया है। कैंप ब्रावो से कैंप अल्फा तक द प्लेन पाथ हैज बीन सेट। We have multiple teams in the grand finals as of now. 14 टीम नहीं, क्या बोला 14? रुको गाइस, मेरा कुछ स्पेक्टेटिंग शो हो गया है। हाँ क्या आवाज दे रहा है ऐसा? हाँ अभी सही है आई थिंक। ना आवाज नहीं आएगा इससे भी, तो मैं जब तक पैराशूट नहीं खुलेगा तब तक आवाज नहीं आएगा। ओके ऑलराइट गाइस, वी हैव सीन कि यार मतलब टीम
घोष तो अलग ही उतरा है, विकास भी अलग उतरा है, क्या वो अलग टीम है? कंफ्यूज हो रहा थोड़ा. बट इन द मीन वाइल वी कैन सी दैट पीपल हैव फाउंड देयर लोकेशन. अभी के लिए वेरी फ्यू पीपल आर क्लोज टू ईच अदर. विकास एंड हिज टीम माइट बी लैंडिंग एट द सेम स्पॉट. और वो सब छोड़ो गाइस, हम लोग बूट कैंप देखने वाले हैं. बिकॉज बूट कैंप पे हमें पता है कि सबसे ज्यादा लूट मिलता है, सबसे ज्यादा गन फाइट होता है. एज ब्लेड ने ऑलरेडी जतन को मार दिया है. डेंजर ऑल्सो फॉलोइंग लो गाइस. ये यहाँ पे ना बहुत ऑलरेडी फाइट हो रही है. डेंजर नॉक्ड बाय हिज टीम. वी कैन सी नॉर्मैन रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, बट क्या पता ब्लेड सामने से पुश कर रहा होगा. आराम से लूटते लूटते, एंगल्स क्लियर करते करते ही इज ट्राइंग टू स्पॉट हिज फ्रेंड्स. एक किल ब्लेड ने ऑलरेडी ले चुका है. उसको पता है उसके बंदे आजू बाजू ही है. डेंजर अभी भी नॉक्ड है. रिवाइव होते हुए नॉर्मैन डज ही स्पॉट समवन ऑन द साइड. एक पाथवे बन चुका है बीच में. फर्स्ट एड एंड हीलिंग देते हुए क्या होने वाला है ये जगह पे. द मीनवाइल ब्लेड, क्या वो अभी भी लूट रहा है? एंगल्स होल्ड कर रहा है. ही हैज अ नेड लॉक्ड. अभी देखते हैं उसका फेंकने का टाइमिंग, क्या वो सही रहेगा, क्या वो गलत रहेगा. द नेड हैज बीन चक्ड इन. फटता है, हल्का सा डैमेज शायद से देता है, बट नो रियल हार्म कॉज. एक रिवर्स नेड आते हुए. इन द मीनवाइल ओजी जिग्नेश ओजी टेकिंग डाउन रैंगो. नॉर्मैन स्टिल लूटिंग ऑन द साइड. थोड़ा सा स्प्रे आ रहा है एक दूसरे से. डेंजर really low on ammo. उसके M4 में तो ammo अभी ammo उठा लिया है उसने, तो he is not really worried about the ammo anymore. but उसके पास healing बहुत कम है. नेड आते हुए डेंजर इज कंप्लीटली सेव राइट. ही इज आउट ऑफ डेंजर एज वी स्पीक. पीछे भी देख रहा है क्योंकि सारे एंगल्स उसके लिए क्लियर नहीं है. बट ब्लेड IWNL एक स्टेस पकड़ के सारे एंगल्स धीरे धीरे देखने की कोशिश कर रहा है. ये हॉट ड्रॉप पे देयर आर अ टोटल ऑफ 3 टीम्स. 3 टीम्स साथ में मिलकर ट्राइंग टू फिगर आउट कि बूट कैंप कौन निकाल ले सकता है. एक और नेट क्लॉक होते हुए बाय ब्लेड. ये ब्लेड in the meanwhile danger on the other side. Aditya on the other side are trying to kill off people. देखो गाइस इतना हो रहा है आजू बाजू. यप. एंड खाओ में भी एक फाइट चल रहा है सौरभ एंड निंजा लोगों का. अभी रिवाइव होते हुए गाइस. मैं अनफॉर्चुनेटली एक ही फाइट पे स्टिक करूंगा बिकॉज अगर मैं 2 फाइट पे जाऊंगा तो मैं दोनों फाइट मिस कर लूंगा. आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट. डेंजर इन द मीनवाइल रिवाइविंग. एक हल्का सा राइट एंगल लेते हुए. यहाँ पे भी राइट एंगल लेते हैं लोग. मुझे लगा वो बस आरपी में होता है, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं. बाय द वे आरपी तो यार है ही. तुम आरपी वालों का ही स्क्वाड देख रहे हो. नॉर्मैन स्टेयर्स का एंगल होल्ड करते हुए विंडो से भी देख रहा है, ट्राइंग टू स्पॉट टीम्स अराउंड हिम. 3 टीम अभी भी बूट कैंप में है. एक मोलोटोव आते हुए. क्या डेंजर की जिंदगी डेंजर में है? मोलोटोव उसके पास नहीं जा चुका है अभी के लिए. थोड़ा सा आजू बाजू है बट नॉट इनफ टू टेक हिम डाउन. इन द मीनवाइल 4H ex MVP बस देख रहा है, शो देख रहा है. बोला यार तुम लोग लड़ते रहो, हम बाद में आके थर्ड पार्टी करके सबको फिनिश करके 8 किल ले लेंगे. यही उसका प्लान है. जेंटलमैन ओपी ट्राइंग टू फाइंड एंगल्स, ट्राइंग टू स्पॉट प्लेयर्स. देखे कि थोड़ा बहुत अगर लूट भी मिल जाए तो बढ़िया रहेगा. बूट कैंप के ऊपर है एकदम. आदित्य एक किल लेते हुए. गाइस आई थिंक ये लोग बहुत सेफ खेल रहे हैं, बट मुझे ये भी लग रहा है कि एज सून एज मैं बूट कैंप से हट जाऊंगा यहाँ पे केओस मच के कोई ना कोई डाउन होएगा. ब्लिजी क्लॉकिंग इन द नेड, स्टॉपिंग, रनिंग बैक. उसने सोचा कि एक दूसरा एंगल से फेंकता हूँ, क्यों नेड वेस्ट करना है मुझे. वैस नॉर्मैन अभी भी केयरफुली एक स्टेयर्स एंगल होड़ते हुए. वी हैव ब्लेड IWNL थोड़ा सा लूटते हुए. गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज टीम. सब लोग बस एंगल्स होल्ड कर रहे हैं, कोई रिस्की मूव नहीं ले रहे हैं. दे आर प्लेइंग वेरी 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 सेफ. ओनली स्पार्क क्लॉकिंग अ नेड. ओनली स्पार्क क्या मैंने ओनली पायरेक्स सॉरी क्लॉकिंग अ नेड. गोलियां चल रही है गाइस एंड going in with a shotgun, getting 1 kill. They're pushing around all the angles. One guy is knocked. खत्म भी हो चुका है ये नॉक. मैं बंदा नहीं बदल पा रहा हूँ guys, but there's only 1 person alive. एक रिवाइव आते हुए. Parix hears some footsteps. He's trying to go rescue the other teammate. A smoke coming into the vicinity. यहाँ पे अब उसके बंदे, बहुत सारे बंदे डाउन हैं.
Meanwhile, DF going from the sidelines, एक दूसरा एंगल लेके फ्लैंक करते हुए, he's trying to go push, he's trying to go get kills. एक फिनिश सिक्योर, he's going to go towards panic, he does not look to his left side. वो लेफ्ट साइड एक मेन जगह था, बट वो लेफ्ट साइड का वैल्यू नहीं था, एज बाकी टीम आके टीम नंबर 12 has come and बूट कैम्प अभी के लिए तो खाली है with exactly 6 kills to their name. बूट कैंप पे अभी एक ही टीम बची है, आराम से लूट सकते हैं. इन द मीन वाइल वी कैन सी यहाँ पे एक फाइट जहाँ पे किलर स्मिथ नॉक्ड है, उसके आजू बाजू वी हैव आवर होम टीम. एवी को मैं एक्सपेक्टेड नहीं कर पा रहा, मेरा एम लैब्स का कमजोर हो गया क्लिक करने का. एवी ऑन द साइड लाइन्स पुशिंग इन, he has only ivory in front of him, getting shotgun from the right side. Spartan going for the shotgun. AV really low on health, gets instantly knocked, instantly finished as Spartan takes a kill for his team. लास्ट गेम भी स्पार्टन के पास बहुत किल्स है उसके नाम पे, वो एक नेट क्लॉक कर रहा है, उसको नहीं पता है बाकी के लोग किधर है. डेविल एंड डीमन जगह पे है, he is taking his red dot spraying. एंड उधर डीमन भी बन चुका है. डेविल द सोल सर्वाइवर ऑफ हिज टीम, अगर वो लोगों को मारेगा वो फ्यूचर एक्स एंड डीमन दोनों को बचा सकता है, पर शायद स्पार्टन उसको पुश करेगा. उसने एक बंदा देख लिया है, गोस फॉर द स्प्रे, मिसेस, एक नेट अंदर आ चुका है, मोल्टोव इन फैक्ट, एंड जल के द स्क्वाड हैज बीन टेकन डाउन एज स्पार्टन सिक्योर्स मोर किल्स टू हिज नेम. इन्होंने बढ़िया फाइट लिया है लोगों ने. इन द मीनवाइल फ्रॉस्ट यहाँ पे बस पत्थर के पीछे छुपा है, उसको शायद से पता है कि पूरा टीम 8 जोन के बाहर से अंदर अप्रोच करेंगे. और वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू सिक्योर अ स्क्वाड किल. शायद से बंदे दिख गए हैं उसको, हल्का सा पुश कमिंग इनटू द जोन. धीरे धीरे वो कवर लेते लेते आ रहे हैं. IG फ्रॉस्ट बस पेशेंटली रुका हुआ है, पेशेंटली वेटिंग आउटसाइड द सर्कल. उसका रेड डॉट खोल के रखा है, उसको पता है उधर एक गाड़ी है, एंड लेट्स सी वो क्या कुछ कर पाता है ये सिचुएशन में. पेशेंस इज द नेम ऑफ द गेम फॉर IG फ्रॉस्ट, एंड पेशेंस से ही वो आगे बढ़ के चलेगा. बस वो गाड़ी पे फोकस है उसका, और किसी चीज पे नहीं. ओनली द कार. वो देखेगा कि बंदे बैठ जाएंगे एंड उसका रेड डॉट का स्प्रे चल जाएगा. वो कनेक्ट कर पाएगा का नहीं, वो टाइम विल टेल. द मीनवाइल राघव टेकिंग डाउन आइवरी. देयर आर नो मोर पीपल इन द मिड्स ऑफ दिस बैटल राइट नाउ. गाड़ी में बैठ गए हैं वो लोग रेड डॉट के साथ. इज ही गोइंग टू स्प्रे? नो, ही लेट्स द कार गो. 2 गाड़ी है, बस स्पेक्टेटिंग, वो अपना पोजीशन रिवील नहीं करने जाने की कोशिश कर रहा है, एंड ही डिसाइड्स to let them into the zone with no casualties, no damage, and most importantly no information. क्योंकि यार kills हो जाएंगे, डैमेज देते रहेंगे, हील होते रहेंगे, बट इंफॉर्मेशन के बिना क्या ही कर सकते हैं लोग. स्पार्टन ये गेम में भी 2 किल ऑलरेडी ले चुके हैं. लास्ट गेम में 6 या 7 किल थे ये एक बंदे के पास. आई थिंक दिस इज द टीम दैट इज करंटली ऑन टॉप ऑफ द लीडर बोर्ड, गोइंग स्लाइटली इनटू द जोन. स्पार्टन का टीम, अगर ये लोग ने राइट लिया सैंडविच हो सकते हैं, पर राइट नहीं लिया उन्होंने अभी तक. एक ड्रॉप आ चुका है, एंड ड्रॉप के आजू बाजू देयर आर मल्टीपल टीम, पर क्या वो ड्रॉप पे फोकस करेंगे? वी हैव रोहित कैंपिंग. सबको पता है कि हर बार किल से पॉइंट्स टेबल नहीं बढ़ते, कभी कभी दिमाग से खेलना पड़ता है, कभी कभी यू हैव टू फोकस ऑन दैट चिकन डिनर, क्योंकि वो चिकन डिनर में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं. चाहे तुम जितने भी किल्स ले लो, एक चिकन डिनर के साथ सीधा आपकी टीम को मिलेंगे 10 पॉइंट. और वो 10 पॉइंट बहुत चीज़ें बदल सकता है, क्योंकि अभी के लिए बस 3 टीम डबल डिजिट है लीडर बोर्ड पे, एंड 1 चिकन डिनर गेट्स यू एट दैट डबल डिजिट मार्क एटलीस्ट. गॉड इज पुशिंग अवे. शायद से स्पार्क को पता है ये चीज़, बट स्पार्क एक्चुअली उसको नहीं पता है. स्पार्क नीड्स टू गो एट अ स्लाइटली लेफ्ट एंगल, पर उसको लगता है कि वो शायद से एक्सपोज होगा. ही स्पॉट्स पैरागॉन, ही स्पॉट्स 1 मोर पर्सन. 2 लोगों को इजीली ले सकता है ये. स्पार्क इज नॉट रिवीलिंग हिमसेल्फ, वो एकदम ट्रिगर डिसिप्लिन के साथ खेल रहा है. ही स्पॉट्स 1, पुशेस इन, सीधा ट्राइज टू डब्ल्यू, बट एक गलती, उसको लगा उधर एक ही 2 बंदे हैं, एंड उधर वो सीधा कूद के मारने की कोशिश किया. जायरो गॉड, रोहित ट्राइंग टू हेल्प हिम आउट,
बट यार उसकी एक गलती, एक ओवर अग्रेसिव पीक ने उसका जीना हराम कर दिया. Gyro got on the side trying to take some angle. Deoxy and team pushing in. Team WT. Yeah, Paragon going for the 4x play. Shoots down Gyro God, getting out the red dot, trying to finish him, but Gyro God, he's currently in the side. We have the entire team pushing in together, trying to find angles, jumping and spraying. Deoxy using smokes, using nades. Paragon flanking in from the side. Divine भी push करते हुए पूरा ये घर का आजू बाजू entrances, exits सब कुछ घेर के रखे हैं. The door has been opened, the molly has been thrown in, and उधर बेचारा एक बंदा रोहित खड़ा है waiting for his death. Can he get any exit kills? Three fires coming in, and Rohit finally goes down as Team WT Deoxy securing that kill. और एक फाइट हो गया यहाँ पे, और एक टीम आ गई, टीम वाइब्स वर्सेस टीम डब्ल्यू वाज टेकन. इंस्टेंटली सोचा कि वॉज टेकन को थर्ड पार्टी करते हुए सोचा था कि यार एक बढ़िया टीम फाइट और ले लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली दे हैव वन प्लेयर डाउन. वो लोग एंगल्स ले रहे हैं. एलेक्स एंड हिज टीम scoping in, trying to spray, gets a little bit of damage. We have Beast at half HP right now, throwing a Molotov, making towards Divine. In the meanwhile, Vibs Heru running around trying to find angles. Nades फेंके जा रहे हैं, sprays किए जा रहे हैं, shotguns use हुए जा रहे हैं, and WT God and Legend 1 point in health. Legend 1 point just is medkitting up to secure himself to live to fight another day. Paragon बस एक angle hold कर रहे हैं, बहुत cheeky angle है, going to throw a Molotov, hit करेगा. I'm not sure who it hit, but यार थोड़ा सा हो गया उधर. Paragon using his Red Bull, using his energy drink, heal करते हुए, angles hold करते हुए, and now we are at stalemate. सबको पता है कि हम एक घर में अटके हुए हैं, हम एक वॉल पे अटके हुए हैं, हम एक एंगल पे अटके हुए हैं, बट कौन सा टीम पहला पीक लेगा, कौन सा टीम बोलेगा लेट्स रैप अराउंड, लेट्स पुश इन, लेट्स गेट द किल, लेट्स सिक्योर सम मोर स्क्वाड वाइप्स. कुछ स्प्रेज एंड प्लेज आ रहे हैं. डिवाइन जस्ट प्लेइंग थ्रू द डोर, वो दरवाजा खोल के ट्राइंग टू स्प्रे, ट्राइंग टू प्रे एज गॉड टेक्स डाउन वन. गॉड इज स्मोकिंग इन, ट्राइंग टू गो फॉर मोर. डिवाइन पुशिंग इन थ्रू द स्मोक, थोड़ा गन स्पैम करते हुए trying to get a little bit of damage on his team. Whereas Paragon also just lurking in the smoke, देख रहे कि कुछ भी information मिल जाए. Divine, Paragon and God together, one of them going towards Beast. Second gets traded instantly. Divine yet alive, looking under the building, trying to see if he sees some leg. He gets one, goes for the finish. Paragon, Divine, they have a person down, going for an instant revive. Paragon trying to get as much information as he can, goes to safety जब तक revival नहीं हो जाता. Building के नीचे, he's trying to spot, किसी के पैर दिख जाए, थोड़ा सा दिख जाए, can go for a kill. But यहाँ पे Vibs Hero trying to be the only, he is the only survivor. The entire team is against him. He tries to jump, tries to get a kill, but Team WT has taken down one more. And क्या पता, Team WT has one more guest entry. एक और गेस्ट एंट्री के साथ उनको पता लग गया है कि जब भी वो एक फाइट ले रहे हैं, वो एक फाइट क्लीन अप कर रहे हैं, फिर अचानक से उनको एक और स्क्वाड दिख रहा है. Right now we have one team completely outside the zone. हाथ इनका जोन है एंड में, एंड द सर्कल इज क्लोजिंग इन. क्वाड्री एंड हिज टीम बहुत बढ़िया फाइट लिया अभी. टीम वॉज टेकन ने 2 स्क्वाड वाइप कर दिए. अभी के लिए 3 टीम है लास्ट जोन, नॉट लास्ट जोन में, ये नेक्स्ट जोन में. एंड यहाँ पे एक फाइट A fight has been initiated. थोड़ी सी गोलियां चल रही है, but I think they will go back to safety. वो लोग सोचेंगे कि अभी के लिए जोन में अंदर जाते हैं क्योंकि ब्लू जोन अप्रोच कर रहा है, and I don't think they want to take a risk in that blue zone. Team was taken. जोन में तो आ चुके हैं. They know they are safe. They know उनके पास बहुत ज़्यादा points है, बहुत ज़्यादा kills है. But यहाँ पे DF, Kings, they are next to some people. Orange. क्या ये लोग वॉस टेकिंग के क्रॉसर में जाने वाले हैं? क्या पैरागॉन को कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा अबाउट दीज गाइज? आई थिंक अनफॉर्चुनेटली नॉट, एज दे आर ऑलरेडी इनसाइड द जोन.
In the meanwhile, Saurabh and his team वो थोड़ा सा सराउंड हो रहे हैं. उनके आजू बाजू 3 टीम है, if I'm not wrong. आदित्य ऑलरेडी 2 किल के साथ, लकी, जिग्नेश ओपी सब एंगल होल्ड कर रहे हैं. In the meanwhile, Spartan and his team. Spartan जो लास्ट गेम में आई थिंक टॉप फ्रैगर था, if I'm not wrong. इस गेम में ऑलरेडी 3 फिनिशेस के साथ he is trying to push into the circle. वॉर जोन हो चुका है गाइस, हर जगह गोलियां चल रही है. आनंद ओपी behind a rock, Aditya holding a house. एक ट्री के कवर से टीम 22 का एक बंदे को लग रही है गोली, but he goes on the side and gets an instant knock, a wonderful kill. लेफ्ट से गोलियां पड़ रही है, कितने जगहों से कवर ले सकता है, बस एक पेड़ है इसको कवर देने के लिए. just one tree, he needs some smokes, he gets shot, one bullet, he's gonna get shot, and next bullet from the left side. अगर वो हल्का सा पीक हो जाए कुछ भी हो सकता है. फर्स्ट एड यूज करे जा रहा है and trying to find a way. blue zone के अंदर भागते हुए, but it's instantly knocked as Mars on the other side pushing into the blue zone. क्या ये भी instantly knock हो सकता है क्योंकि ये ओपन में है, एक ट्री कवर है उसका, and वो ट्री कवर काफी नहीं था उसके लिए. The squad has been taken down and another squad wipe into play. Spartan and his team holding angles. Berlin, Raghav, दोनों घर में, and oh my god, Spartan with a wonderful nade takes down Raghav instantly. Berlin the sole survivor. एक Molotov B lineup हो रहा है, क्या Spartan ढंग से ये Molotov फेंक पाएगा? He's throwing it, it lands, it might go onto Raghav. Yep. Where is Raghav? Raghav नहीं दिख रहा है मुझे. Because they finished. अच्छा, Raghav has been taken down, and guys यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्शन मिलने वाला है as all the teams are approaching in very closely to each other. यहाँ पे सौरभ फिर से कवर लेते हुए, एक गाड़ी है उसके पास बाजू में, just to escape a little, and in the meanwhile we have back was taken PasKaLL. He has been knocked down, but his team is yet alive. God was spraying down on Hyper, gets a little bit of damage, prones into the area. PasKaLL is getting revived by Divine on the sidelines. In the meanwhile, we have Spectre with his team spraying, trying to get some angles. They are all around the stones, they are taking cover, but Spectre has a very cheeky angle. He spots one, goes for the finish. Needs one more bullet to connect, and he does get one kill confirmed to his team. He knows that यहाँ पे और लोग भी है, वो थोड़ा सा रिस्की पे नहीं करता है, पर यहाँ पे उसको पता नहीं है रिवाइव हो चुका है. Spectre might be pushing to his own death. Spectator running away, trying to throw some nades. In the meanwhile, IG Frost is also on the back lines. एक और nade, क्या पता वो फेंकते हुए kill मिले, पर उसको पता लगे कि right पे से लोग उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं. He is getting third partied. नीचे सब नीचे देखो, याप परफेक्ट. Alright guys, अभी जोन में बहुत ज़्यादा एक्शन हो रहा है, तो we're going to see it in this mode. बहुत चीज़ें हो रहा है. सौरभ sitting behind a stone with Jignesh OP. Spartan एक और नॉक करते हुए on the sidelines. यहाँ पे एक लास्ट जोन आ रहा है, and Spectre versus was taken. Spectre is the only man surviving at this point. Team PasKaLL, PasKaLL and Spectre. Spectre's inside the water. ये इनको पता नहीं है शायद से. हर जगह कोई ना कोई फाइट हुए जा रहा है. Spectre might just fall down low on health. Spartan, 2 people from his team alive. In the meanwhile, Spartan gets Molotov and taken down instantly. यहाँ पे एक और फाइट चल रहा है. हर जगह there are only fights. As we can see, Kings and Red X fighting away. 2 knocked. Manish OP, the only one alive against Team Red X. Will this be another squad wipe coming in? Only 13 remaining. 6 teams in this circle. It is going to be massive chaos as Hyper and Cypher are holding in 2-1 house. That's all. We have a circle approaching. The blue zone's approaching, and 5 teams only remain. Team was taken with Divine and PasKaLL. 2 players. Hyper, the sole survivor, second team. DF, sole survivor. In the meanwhile, we have Reflex, Red X. I think they won the last game. They have all 4 people. And Killer Smith, the 5th person on the sidelines. Hyper has Cypher with him right now. यहाँ पे देखते हैं guys,
देखो हाइपर एंड साइफर 2 लोग हैं, वॉस टेकिंग के 2 लोग हैं, बाकी के 1-1 लोग हैं, बट यार ये जो 4 का स्क्वाड है जिनको ऑलरेडी लीड कर रहे हैं पॉइंट्स टेबल पे, कैन दे गेट अ मैसिव एडवांटेज? गाइस देखो अभी टीम किल्स के लिए नहीं खेलेगी, दे विल प्ले फॉर पोजीशन। क्या किलर स्मिथ ये पोजीशन सिक्योर कर सकता है? ही इज टेकिंग अ लॉट ऑफ जोन डैमेज। क्या वो बस बैठ के हील करेगा? इन द मीनवाइल we have DF holding in. Hyper getting pushed. Hyper is going to get pushed. He's trying to get a kill, gets taken down. Cypher, the only person left of the team. We have still 5 squads remaining in this last zone. Killer Smith, heal battle god, just healing away to glory. वो बोल रहा है तुम लोग लड़ते रहो, हम बस heal करते रहेंगे. A wonderful nade coming in from Cypher, taking down one. Hyper in the meanwhile gets finished. Cypher pushing, tries to get a kill, but he does not know that is the entire squad alive of Red X. बाजू से गोलियां चल रही है. And PasKaLL takes down one. He's throwing wonderful nades. What the fuck? What just happened? Red X. यहाँ पे साइफर कूद के कुत्ते मार के हुए, PasKaLL नेड फेंकते हुए, and Red X 4 लोग, they get destroyed, they get massacred. यहाँ पे Killer Smith running out of healing. Oh my god, that was so clutch. We have 5 players remaining, just 4 teams, and the zone is going in. Tables have been turned, and right now the biggest advantage is of team was taken. PasKaLL spraying away. We have only 3 teams remaining. We have Cypher, we have Divine, we have DF, and we have PasKaLL. 4 players in the zone, in the last circle. The zone is coming in. Divine pushing in onto DF. Gets taken down. 1 person from was taken has fallen. It's Cypher versus PasKaLL on the sidelines. Is DF going to get a chicken dinner? Cypher in the zone. PasKaLL going for the spray. It's a 1v1. Team WT. DF falling low. Spray and pray. And winner chicken dinner as team was taken. Finish at the top. Already खत्म हो चुका है, but just to let you know, before this game we had a game number 1. So while the teams are going to get ready and the management is going to get ready for game number 3, here you are going to take a look at the current points table. This is game 1 का points table, guys. Remember, अभी game 2 का points table calculate होके update होके तुम्हारे screen पे आएगा. Until then, this was where we left off last time. भाई मुझे यहाँ पे वो टीम रेड एक्स के लिए बुरा लगा भाई, कैसे वाइप हो गए थर्ड पार्टी में 2 साइड से. एक्चुअली PasKaLL ने वो नेड किया था, उसकी वजह से उसको एडवांटेज मिल गया साइफर को. देन साइफर जस्ट पुश इन एंड उसको फिनिशेस मिल गए डीजे से. तो गाइस मैं तुम लोग को वो एंड स्क्रीन तो नहीं दिखा सकता, अगर कोई सोचेगा कि वो एंड स्क्रीन दिखने मिलेगा, बिकॉज जो पॉइंट्स का है, जो सस्पेंस है, ऐसा ना हो यार कि खुद से कैलकुलेट करने लगो. तो बस यार गिव इट सम टाइम. गिव इट टू मी, आई मीन गाइस मुझे एक चीज पता है कि कास्टिंग स्पेक्टेटिंग थोड़ा सा इंप्रूवमेंट था गेम 1 के कंपैरिजन में. इंप्रूवमेंट अभी भी ना वो तुम जैसा वो चेंज करके करते हो ना, तो इंस्टेड ऑफ ओपन मैप एंड देन तुम्हें वहां पे दिख जाएगा कि कहां पे फाइट चल रही है. हाँ वो थोड़ा सा रिफ्लेक्सेस स्लो है. हाँ तो वो अभी हो जाएगा. 1v4 ब्रो भाई. गाइस जो भी ट्यूनिंग कर रहे हैं, द स्ट्रीम डज हैव अ 2 मिनट डिले, तो हम तुम्हारा लाइव चैट तो नहीं रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, पर जो तुम हैं अब हर्षल देखो क्या हुआ. एक सेकेंड. ना ओके बस. अच्छा कोई दिक्कत नहीं. ओके इसका कोई दिक्कत नहीं, ये तो बस 2 घंटा हुआ है अभी. गाइस बीजीएमआई को नहीं पता, पर उन्होंने मुझे 2 घंटे का वार्निंग दिया. उनको नहीं पता कि मैं खेल ही नहीं रहा हूँ. उनको ये नहीं पता कि अगर मैं खेलूंगा तो मेरे साथ क्या होएगा.
वो बस हमें पता है. But anyways guys, before we go to a game 3, which is going to be ओए before we go to a बोलो, game बोलो. 3 which is going to be the map of Vikendi. मिरामर खत्म हो गया है, सैना खत्म हो गया है, अभी हम विकेंडी में जाने वाले हैं. उसके बाद मेरा फेवरेट मैप जो है इरेंगल. पॉइंट सिस्टम जब टीम्स खेलेंगे दे आर गोइंग टू गेट देयर ओन पॉइंट्स फॉर एवरी गेम. एंड चिकन डिनर बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है. सॉरी गाइस, थोड़ा सा प्रोडक्शन एरर आया था, बट हाँ, दिस इज द पॉइंट सिस्टम गाइस. फर्स्ट प्लेस को 10 पॉइंट्स मिलेगा. 6 5 4 3 2 1 0. ऑब्वियसली हर किल का एक पॉइंट मिलते रहेगा लोगों को. फॉर ऑल द पीपल ट्यूनिंग इन राइट नाउ जो अभी स्ट्रीम पे आए हैं, वी आर इन द ग्रैंड फाइनल्स एंड हियर आर योर फाइनलिस्ट. टोटल ऑफ 18 टीम्स राइट नाउ. एंड गाइस हम लोग गेम 3 के पहले एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे. अंटिल दिस ब्रेक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू शो सम लव टू दिस टूर्नामेंट, टू द टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स. सब ने बहुत मेहनत किया है फॉर प्रोडक्शन, फॉर ओवरलेज, फॉर एवरीथिंग. सब ने बैठ के दिन रात ये लोग टूर्नामेंट संभाले भी है, अभी टूर्नामेंट खेल भी रहे हैं. तो ह्यूज शाउट आउट टू दोस गाइज फॉर लाइक पुटिंग इन सो मच हार्ड वर्क. I will see you after a very मैच रिमेनिंग और अभी 2 मैच बाकी और आज के लिए. alright guys, we'll see you after a very short break.
एवरीवन जो भी ट्यून इन कर रहे हैं, वेलकम बैक टू द बैटलफील्ड ब्लडबाथ। ये डे 1 है ग्रैंड फाइनल्स का। एंड गाइस, गेम 2 के बाद बहुत इंटेंस सेकेंड लास्ट सर्कल और लास्ट सर्कल थे। बहुत जल्दी ही एक्सपेक्टेशंस बदल गए, टीम्स नॉकआउट हुए, टीम्स को किल मिले, एंड वो सब देखकर इवेंचुअली जिस चीज़ के तुम रुके हो वो फाइनली अपडेट हो चुका है। वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस आफ्टर गेम नंबर 2, आफ्टर द सेकेंड मैप, अपडेटेड पॉइंट्स टेबल। टीम रेड एक्स लेगेसी बहुत ही ज्यादा आगे जा सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़े से नेड्स, साइफर का जंप एंड शूटिंग, उधर उनको एक स्क्वाड वाइप देके उनके पॉइंट्स हल्के से कॉम्प्रोमाइज कर लिए। अगर वो उधर बच जाते वो पॉइंट टेबल में बहुत ही आगे पहुंच जाते। बट नॉनदलेस रेड एक्स लेगेसी हैव स्टिल सिक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस। टीम 40N ने हल्का सा लैडर क्लाइम किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड नाउ दे आर एट सेकेंड प्लेस। वॉस्टेकन ने एक मैसिव कमबैक किया, मैसिव कमबैक, एक चिकन डिनर लेते हुए, टेकिंग द थर्ड प्लेस इन द टेबल राइट नाउ। टीम 4H एंड टीम सॉलिड दोनों 21 पॉइंट्स पे है, 4th एंड 5th प्लेस। एंड बाकी के टीम्स कोई भी 20 पे नहीं है अभी के लिए, तो सब को कमबैक जोन में खेलना पड़ेगा। जो लास्ट चिकन डिनर विनर था, दैट वाज टीम हंटर्स। वो ये वाले गेम में नहीं, लास्ट पहले वाले गेम में वो ये वाले गेम में अंडर परफॉर्म करके उनको ज़्यादा पॉइंट मिले नहीं। वो अभी भी बस 16 पॉइंट पे है, तो उनको भी अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। दे हैव टू फिगर अ वे कि वो धीरे धीरे टेबल्स क्लाइम करे। एंड गाइस, जो भी टीम्स अभी तक ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाई है, इट इज़ नॉट द एंड। आज 2 गेम है और कल भी और गेम्स है। कम बैक किधर से भी, कहीं भी, कभी भी हो सकता है। अभी ये देखना बाकी है कि कौन सा टीम एक्चुअली में कम बैक कर पाएंगे। ये बातचीत करते करते वी हैव ऑलरेडी द नेक्स्ट लॉबी क्रिएटेड। ऑलरेडी टीम्स आर ज्वाइनिंग इन स्लोली। बहुत ही जल्दी एक नया गेम चालू होके वी आर गोइंग टू फिगर आउट कि क्या कोई कमबैक होता है, क्या कोई डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं, कौन एक्चुअली आगे बढ़ सकता है इन द ग्रैंड फाइनल्स ऑफ द बैटलफील्ड ब्लडबाथ। कुछ ही टाइम में सारे प्लेयर्स ज्वाइन कर लेंगे, सारे टीम्स रेडी हो जाएंगे, एंड वी आर गोइंग टू सी हु इज गोइंग टू इवेंचुअली कम आउट ऑन टॉप ऑफ गेम नंबर 3। पर गाइस, लास्ट गेम काफ़ी इंटेंस था। वो एंड में अनफॉर्चुनेटली जो रेडेक्स के साथ हुआ, आई लेजेंड फेल बैड। 4 प्लेयर ऐसे ही इंस्टेंटली इतने 5-6 सेकंड में वाइप होते हुए। Thirty-two players have joined the lobby. 50% of the lobby is currently full. बाकी के प्लेयर्स आते ही हम लोग मैच चालू कर लेंगे।
जो हमारा होम टीम है वो बहुत अंडर परफॉर्म कर रही है इन द ग्रैंड फाइनल्स. अभी क्या वो कम बैक कर पाएंगे कि नहीं देखना पड़ेगा. दे आर करंटली एट 18 teams and we're going to figure out ki eventually which team manages to secure a prize pool of around 15,000 rupees. 6,000 पहले प्लेस के लिए, 3,000 for the runner up, 2,000 second runner up, fourth position 1,500, fifth position 1,000 and an MVP getting 1,000 rupees. हम लोग के पास टोटली 4 मैचेस हैं आज के, उनमें से 2 खत्म हो चुके हैं. मिरामा सानो का ओवर, नेक्स्ट इज गोइंग टू बी विकेंडी एंड उसके बाद इरेंगल. इन चारों मैप्स में से मुझे बस इरेंगल का थोड़ा बहुत नॉलेज है, बाकी मैप्स का कुछ नॉलेज नहीं है. तो आई एम गोइंग टू डू माय बेस्ट इन स्पेक्टेटिंग. एंड अभी के लिए जैसे देखा गया कि रेड एक्स टेबल पे नंबर 1 थे और अभी भी है, पर वो बहुत आगे जा सकते थे. अगर वो 4 लोगों ने चिकन ने सिक्योर कर लिया होता, they would have been very ahead on the points table, because ये points table में जो point system है हमारा, first place को मिलता है a total of 10 points, second and moving forward को 6, 5, 4, 3, 2 and जब कोई 7th या 10th आता है उसको बस एक ही पॉइंट मिलता है. एंड किल्स के पीछे लोग इतना भाग रहे, जैसे वो स्पार्टन ऑलवेज बीइंग अ टॉप फ्रैगर इन मेजॉरिटी ऑफ द थिंग, अग्रेसिव जाते हुए किल्स लेते हुए, ही गेट्स 1 point per kill. तो अपने टीम को धीरे धीरे आगे लेते जाते हुए, दीज आर द टीम्स जो बैटल कर रहे हैं फॉर द टोटल प्राइस पूल ऑफ 15,000 rupees. हियर आर योर फाइनलिस्ट. वी हैव वॉज टेकन Gen 1 Akatsuki, 40N Esports. ये नाम माने है कि नामुन है, पर वट एवर. नमूने अच्छा नामुन है, मुझे लगा ठीक है. रेड एक्स लेगेसी, कैपिटल लेटर्स, ये ऐसे टीम नाम किससे रखा है, पर मुझे नहीं पढ़ना है. कौन सा वाला? सेकंड लाइन में पहला वाला. सेकंड लाइन में पहला वाला. हाँ अच्छा, टीम मुझे पता है किसका है. नहीं, टीम हंटर्स तो पता लग जाएगा, मैं किसका टीम नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ ठीक है छोड़ो. टीम हंटर्स, टीम 4S, सर्फ एक्सेल, वाइब्स. रुको यार, फाइनल्स का वो फिर से लड़ने तो मेरे लिए. वाइब्स ई स्पॉट, अनाथ गैंग, टीम सॉलिड, एलीट किंग्स, टीम फनाटिक, टीम इन्फर्नो, टू हंटर्स एंड इग्निशन एक्स. बस एक टीम का नाम मैंने नहीं लिया और नहीं लूंगा. Mm-hmm. 45 players in the lobby and we are just 2 games away. आज का 50% of the matches are over. The grand finals of Battlefield Bloodbath are moving in. And जब तक ये गेम चालू होता है guys, I will also go take a water break so you can see all the details here.
This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Alright guys, without any further ado, we are going to be hopping in to game number 3, which is going to be weekendy. यहाँ पे everyone is just loading into the game. Countdown timer has started, and here we are kicking off game number 3 of the Battlefield Bloodbath. We have the plane pass starting from Dobro, heading all the way to Trevno, if I'm pronouncing them correctly. यहाँ पे टीम्स अपना अपना पाथवे ढूंढने वाले हैं. एंड गाइस ये ऐसा मैप है, वीकेंडी ऐसा मैप है जो मैंने लाइफ में शायद से 1 या 2 बार खेला होगा. तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि कौन सा क्या होता है, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, क्या बोलते हैं चीज़ों को. बट गेम 3 इज लाइव एंड टीम्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड जॉब. टीम्स देख रहे हैं कि किधर अपना एरिया सिक्योर करे, किधर जाके लूट सकते हैं. Are we going to see any hot drops? Are we going to see any instant landing fights? क्या टीम्स सेफ खेलेंगे या विल दे प्ले अग्रेसिव? देखते हैं कौन सा टीम पॉइंट्स हंग्री होता है एंड कौन सा टीम बस दे आर गोइंग टू प्ले फॉर दैट चिकन डिनर. पैराशूट्स हैव बीन ओपन्ड एंड धीरे धीरे स्लोली everyone except Danger and his team have gone to the right of the plane pathway. Left में कोई नहीं गया है except one team. That's all, just one team. Yup. Right now people are just landing. मैं रुकूंगा सब लैंड होने के लिए. ये काफी क्लोज लग रहे हैं on the big map. आधे क्लोज? नहीं, इतना भी क्लोज नहीं है. Different compounds. यहाँ पे भी एक कंपाउंड. ये क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे शायद से आगे जाके सीमेंट फैक्ट्री की तरफ ही फाइट देखने मिल जाए अगर वो इनका क्लैश ड्रॉप हुआ तो, मतलब ड्रॉप क्लैश जो भी. टीम WT का हो सकता है. मल्टीपल टीम्स आउट हियर एक्चुअली एंड मल्टीपल टीम्स आउट हियर ऑल्सो. यहाँ पे टीम्स आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर. वी हैव मैट्रिक्स. यहाँ पे 4 टीम आजू बाजू है, वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर. कुछ भी हो सकता है एज ऑफ नाउ. एंड यहाँ पे टीम वॉज टेकन एंड क्वाड्री एंड हिज टीम बस गाड़ियाँ ले रहे हैं, थोड़ा सा लूट सिक्योर कर रहे हैं, सेफ्टी की तरफ जा रहे हैं. डिवाइन एंड हिज टीम ऑल्सो जस्ट बीइंग थोड़ा सा सिक्योर आउट हियर. ज़्यादा अग्रेसिव नहीं खेल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हर टाइम किल्स पे ही पॉइंट्स नहीं निकाल सकते हैं. पोजीशन भी मैटर करता है. एंड ये पोजीशन मैटर में वी हैव द पीपल जो लोग जनरली अग्रेसिव खेलते हैं, सबसे ज़्यादा किल्स लेते हैं. स्पार्टन एंड हिज टीम आराम से लूट रहे हैं. दे आर जस्ट सिक्योरिंग सम स्पेसिफिक लूट. बाकी सब थोड़ा सा दूर दूर है. सबसे ज़्यादा क्लैश तो हमें शायद से यहाँ पे ही दिखने वाला है. दिस माइट बी द फर्स्ट फाइट ऑफ द गेम. स्पार्टन एंड हिज टीम बस लूट रहे आराम से. जतिन एंड हिज टीम वो भी एक अलग कंपाउंड में लूट रहे हैं, बट दे आर वेरी 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 क्लोज टू ईच अदर. एंड मैट्रिक्स और अपने बंदे आजू बाजू विसिनिटी में पर काफ़ी दूर है. किलर स्मिथ 4S के साथ थोड़ा सा स्प्रे कर रहे थे. आइवरी एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के हुए. ही नोज जतिन इज देयर. उसको जतिन का पोजीशन पता है. रेड डॉट खोल के ऑलमोस्ट गोली मारने थे. जतिन हैज बीन एक्सपोज. आइवरी देख रहा है किलर स्मिथ भी शायद से वो एंगल देख रहा है. He's clocking in a nade. Jatin in the meanwhile in the midst of an angle. Ivory going to push on Jatin. He's trying to spot him run, but Jatin falls back to safety. In the meanwhile with the red dot taking down Sahil instantly. Sahil is going to get revived guys. वो दिक्कत नहीं है, but Jatin out of position पे है. Spartan उनका जो मेन बंदा है जो फ्रैग करे जाता है होल्डिंग एन एंगल. रुक रहा है कि जतिन और पीछे भाग जाए, बट जतिन हैज बीन सेफली रिवाइव्ड. Nade एक हाथ में है, has not yet clocked in, throws it outside, tries to get a kill, but unfortunately no one was damaged. In the meanwhile, Spartan walking up the stairs, tries to find if anybody is inside the building, but is clearing the area धीरे धीरे.
He's going to be chucking a nade, going to be making sure he's safe. Bullets are fired. Spartan gets slightly scared and falls back to safety. उसको नहीं पता कि अंदर है कि नहीं. In the meanwhile, we have Killer Smith. एक Red Bull energy drink पीते हुए. Shots have been fired. यहाँ पे बस थोड़ा सा ट्रेड्स हो रहा है. किलर स्मिथ ने एक बंदा डाउन कर लिया है. ही इज पिकिंग अप अ लिटिल बिट ऑफ लूट और वो देख रहा है कि क्या वो और किल्स ले सकता है कि नहीं. द मीनवाइल यहाँ पे वॉज टेकन. क्या उसको पता है कि उसके आजू बाजू एक बंदा है? इतना भी पास नहीं है जितना मुझे लगा था मैप देखकर. दे आर एट अ स्लाइट डिस्टेंस. तो वो अपने आप आराम से लूट रहे हैं. सो गोइंग बैक टू वेयर वी वर. इश्वांक एक नॉक करते हुए. He has one finish to his name. He is jumping inside and out of buildings. लूट रहा है, गोली मार रहा है, players pop कर रहा है. They're doing it all. This is the team that is leading the charts right now. Nade has been clocked. Is Nade going to be perfectly thrown? He throws it in the upper window. A wonderful nade. Unfortunately, no damage is coming. Second nade being clocked and has been lined up as well. Another nade, same area being thrown. Demolishes Sahil. A wonderful nade. Spartan and his team instantly walking into the door. Pushes the door. We have Mental on the zone. Tries to get one but gets instantly traded and the squad has been wiped. There is in the meanwhile one more squad in the vicinity. Matrix is just holding angle. उसको पता है कि अगर वो स्पॉट हो जाए, अगर वो दिख जाए सामने वाले टीम को, he is alone. उसका टीम आजू बाजू है ही नहीं. उसका टीम एक दूसरे साइड पे, एक दूसरे कंपाउंड पे आराम से लूट रहे हैं. So he is just playing safe. But Mr. विकास एक और फाइट में आजू बाजू होते हुए with Blaze and AV यहाँ पे वो गाड़ी में है. लेफ्ट साइड के जो नाम है ना टीममेट से, वहां से भी तुम क्लिक करके चेंज करते. ये खोलने की जरूरत नहीं है. मतलब पॉपअप खोलने की जरूरत नहीं. यहाँ पे लेफ्ट साइड में नाम आ रहा है ना. यप. अच्छा ओके ठीक है. तो ये पॉपअप. Alright, a push coming in. They have charged in to the side. We have Blaze and AV pushing in. Spray coming in from Devil. AV goes down. Devil is currently alive. Future is also currently alive. Spray and Pray coming in. Blaze outside the vicinity. We have Ninja outside. In the meanwhile, trying to figure out what to do. Rango spraying, trying to get a lot of kills, trying to get some damage, trying to get a single knock, but decides that there is no surviving. Hides behind the wall. Is getting pushed. He's getting pushed by each and every one. Future is holding on it, going for the revive as Devil, as Blaze push down Rango. Go for a squad wipe, securing 4 kills to their name. In the meanwhile, while all this is happening, we have Matrix playing it safe. No risky plays, but सामने वाले को पता है कि कोई ना कोई तो है. Locations have been revealed and अकेला एक बंदा क्या वो कुछ कर पाएगा? वो एटलीस्ट टीम रेडेक्स को थोड़ा सा कॉशियस बना रहे हैं. रेडेक्स राइट में कैन नॉट बी रियली फ्रीली लूटिंग. उनको पता है कि हमारे एरिया में एक बंदा तो है. वो किधर है उनको नहीं पता है, पर उनको पता है एक बंदा है. सो दे आर प्लेइंग इट सेफ. वो लोग अंधा लूट नहीं रहे, अंधा पुश नहीं कर रहे. इंश्योरिंग कि थोड़ा बहुत लूट के चलो यार मेट्रिक्स का अगर लोकेशन पता लग गया, एटलीस्ट दे कैन ट्राई टू फिगर. बट इश्वांक ही माइट जस्ट नो कौन से बिल्डिंग में है ये. ही इज होल्डिंग एन एंगल जो बस वो बिल्डिंग से पूरा कवर मिल रहा है. उसको पता है कि अगर वो कहीं और गया तो मे बी ही कैन बी एक्सपोज्ड राइट नाउ. अ वंडरफुल एंगल. वेयर्स इन द मीनवाइल वी हैव WT Deoxy गेटिंग अ किल. किधर लड़ रहे हैं वो? यहाँ पे लड़ रहे हैं. Deoxy and his team going for the kills. Paragon holding an angle, sees Gentleman OP, has a gun in his hand, is going to clock in a nade. Nade has been clocked, nade has been thrown. It does not hit anyone if I'm wrong. But in the meanwhile, God sprays down one, instantly finishes him as well. On the other side, we can see Blade, Gentleman, 2 sole survivors getting pushed down. Blade shooting down Deoxy, trying to go for the finish. Ronnie at low points in health is clocking a nade. Is going to throw something, but he does not know exactly what to throw it. Throws a nade, gets a few points in damage, but instantly goes back to survival. Gentleman OP providing some security, clocking in a nade. Gonna throw it onto God. Will be such a good nade if it connects. It does connect beautifully, but a counter nade coming at the same time. This time Blade is there to secure Gentleman OP. A lot of chaos happening right now as Paragon is pushing in.
PasKaLL is going in from the sidelines. He knows one person is low. He has the confidence. He knows that his team is right there to secure him. The nade has been locked and he is waiting for the perfect moment. A little bit of damage coming his way. The nade has been chucked in. Gentleman goes down. PasKaLL is thinking, should he go for the heal? Should he go and push? His team is there right beside him. One not coming in. PasKaLL might just push up. He sees one. Could go for the finish, decides to go for the finish, pushes up all the way to glory, throws something in there, nade coming in to help him get slightly secure with only one person. I can't zoom in completely, but okay, I'm seeing this team only. Blade, sole survivor, is trying to run out at the window. He is in a 1v3 situation. He spots one, takes down one, goes for the second, misses, reloading his gun, trying to secure some kills. He's spamming, pre-firing, going down little low points in HP. Blade getting the one really low second knock. He is in a 1v3. He might just clutch this as Blade sees only one more player left from was taken. A 3v1 now becoming a 1v1 as Blade versus God. Blade getting 3 kills. 3 kills to his name in this matchup and healing up all the way to safety. This 1v1 might become a stalemate. I feel कि वो दोनों लोग अपने अपने रास्ते अपने अपने जगह भागेंगे and they will try to secure position because अभी भी 15 टीम जिंदा है. There are a lot of teams alive and ऐसे smokes डालते हुए going to make some wonderful cover ताकि वो बस यहाँ से भाग पाए. In the meanwhile, what is God doing? God, he's just holding an angle. बस रुका है. He has 0 kills to his name and Blade is 1 kill away from kind of solo squad wiping the team that got the last chicken dinner. बस एक दूसरे को देखते देखते जा रहे हैं यहाँ पे. In the meanwhile, let's see what's happening at the rest of the map. Some teams are outside the zone, some teams are inside the zone. The circle is closing in. Sound has been given to both of them. उनको पता है कि आजू बाजू बंदे हैं, पर उनको ये नहीं पता किधर. They both are in the circle. They both are deeply in the circle. तो दिक्कत नहीं है उनको. यहाँ पे कुछ हो सकता है. As a car is approaching. दो teams. They are going to clash maybe. Team Anand and Future's team. They might just clash. They might just go in and there might be utmost chaos. When the meanwhile Farhan and MVP and his team, they are circling around on snowmobiles, on cars, thinking that they can go for a flank, thinking that they can go third party people. There is going to be a lot of chaos in this circle as two teams are closing in. Team Red X and Team and Future's team. The team that is currently at the top of the leaderboard. They are looking to stay there. They are looking to take down the opposing team. बहुत चीजें चल रही है यहाँ पे. यहाँ का 1v1 एक stalemate है, but दोनों शायद से push हो रहे हैं from multiple sides. A fight can be initiated at any place. यहाँ पे बहुत सारी teams बहुत close है एक दूसरे से. Which team is going to take the first shot? Nobody knows. Safe खेल रहे हैं वो लोग. Not any fast moves. Not taking any risks. But right now we might see teams in danger as Frost is going the other way. He does not know Blade is hiding inside. Blade might get a couple of kills. Nobody knows he's here. Where's God on the other side? Blade sees one, goes for the kill, gets a security, securing the 4th kill. Meanwhile, we have Vic and Frost. Blade in the meanwhile goes down to Danger. Danger from the sidelines gets a cheeky kill of 4 people on the team, yet alive. Not an issue at all for them as combat continues. We have multiple teams, multiple places. This map is really big, yet the fights are so intense. We have Team WT, that was taken. God, the sole survivor. He is going to play for position right now. He thinks that positional advantage will at least secure him a few points, because I think they're number 2 or number 3 on the leaderboard as we speak. Being secure, smoking his car, just wants to ensure that usko ek rasta mil jaye ki he can just get out of the sandwich.
क्योंकि यहाँ पे डेंजर एंड हिज टीम, हाइपर एंड हिज टीम दोनों हैं. Danger taking a high ground is just waiting and just looking from the highest point कि क्या कोई है कोई नहीं है. Can we get a couple of kills? Spraying away onto multiple cars. I'm not even sure if shots are connecting or not. He has a lot of ammunition to expend. A total of 270 clips on that M4 with the 6X. He is spraying away and providing him some damage. Team WT God, his position is revealed. But क्या सामने वाले को पता है कि ये अकेला बंदा है, वो अभी जोन में भी नहीं है, सर्कल के एज पे है. And there's a lot of action coming in. Red X Demigod, the team that we are looking out for, the team that is leading the scoreboard, leading the points table. They are going to be in multiple combat situations. यहाँ पे बहुत सारी टीम्स है, बहुत सारी टीम्स एक दूसरे को combat लेने वाले हैं. We have Killer Smith, he spots one, goes for some kills, gets down Spectre, he might push in. Let's going for the reload right now. We have Ishang with a shotgun, trying to pick off one point in HP. Spartan in the meanwhile healing. This is a team that gets a lot of kills. One person is very low. Ishang, he's really low on health. The other players are currently full. Throwing in some nades. Can they get some kills out here? Killer Smith on the sidelines. He's trying to spot people. Cypher, the guy who destroyed them last game. Revenge has been taken as the push comes in on the left side. Hyper taking down Killer Smith. Spartan in the meanwhile going for a trade. Takes down Cypher as well. And the squad has been wiped. This team is dominating in how they already have 9 kills through their name. But there is battles happening elsewhere as well. As Demigod currently smoking Anand. Trying to save him from just getting more and more damage from Aditya and his team on the sidelines. Smokes are in play. The drop is there. And right now, all the action is in the middle of the circle. IG Frost, WT God on the sidelines, just waiting away. Demigod trying to find some angle. Trying to figure out from where can he get a better peek. We have Phoenix holding the house angle. Holding and trying to see what is the spot for him to actually secure some kills. The teams are really close to each other. We have Spartan, Ivory, Ishang, the team there. Demigod hiding inside a house with Anand also securing the places here. Again, on a hill, we have Farhan and his team at the hill as well. We have AV and his team again. All of them are really close. These guys are playing very close to the circle. IG Frost, WT God, they all are playing for position. They all are trying to just secure themselves for position right now. But let's see what this position holds as Chaos is about to unleash with Ivory getting spotted. He already has 3 finishes. It's to his name. His friends, Spartan in a car, trying to get angles on his team. But we have MVP on the other side from 4H, using the 4X, trying to scout as much as he can. There's battles happening everywhere. There's fights taking place everywhere, which means we must go in the sky out here, because I feel to cover all of this is going to be really difficult. Saurabh with his car coming into the midst. I'm not gonna lie, this global view is very difficult. MVP getting spotted. There's going to be healing. There are players all around him. There's nobody right now who is... Alright, we have Future and his team. They are currently in the midst of a battle. The drop is nearby. We have Blaze also holding it from the house. There's action happening everywhere, ladies and gentlemen. There's action literally happening all around the map, as we have Rayquaza smoking and trying to go into cover. People, Rohit on the sidelines, Frost and his friends coming into the zone, trying to find some cover but getting shot from outside the zone. Red X pushing in, trying to get a third party onto the opposing team, trying to find as many angles as possible. The sandwich is real.
We have Saurabh and his team. They are getting cornered from each and every side. They are trying to figure as to which is the angle that they can get some cover. They are only 3 men alive as Aditya takes the cover of a tree. We have Kings taking down Swaraj. Completely finishing him off. Everyone is fairly close. Spark goes down to the play zone, and right now the battle is going to enhance as Kings is spraying away to glory. He knows that Rohit and Spark are there. He knows that one is knocked. He knows he cannot be revived, but the blue zone is the one causing the curse. He gets a finish. He doesn't know about the second guy out there. He is not looking as of now, as Rohit is yet alive. Rohit is not yet revealed himself, and Kings is kind of confident कि क्या पता उधर कोई ना हो, but he is going to secure himself. Maybe the kill on Rohit, but take a wonderful molly. Will that lash onto Rohit? Will that stop his healing as Rohit is using the first aid? In the meanwhile, Blaze completely goes down, and we have Devil and we have AV just holding into the team out here. Chaos is underway. The circle is closing in. Teams are grouping up. WT God falling down to low health as AV secures that kill with a wonderful headshot. Was taken. A chicken dinner last game has unfortunately taken an early exit this time. We have 11 teams remaining. 30 players on the charts. Lot of damage taking place. Who do I spectate as everybody is so close? AV on the sidelines. You have Aditya and Lucky spraying away. Aditya spotting down Krypton, trying to get some spray into the play, but unfortunately nobody was there to help him out. We have Phoenix, Anand, Demigod in the sidelines, trying to just get as much as damage as they can. Not too many players alive, and Vic is just holding the wall, not making any moves as his friend out here is instantly knocked. So much chaos coming in. Players know where he is. Demigod and his team has some information. Frost and his team being careful on the sidelines, and I think the global view is the only view that will help us know all the action that is happening here. Guys, a lot of action taking place all over, trying to go as high as possible. The zone is coming in. I actually don't know, guys, where to watch. A map काफी बड़ा है, but action is non-stop. Rebra Zero going towards the drop. Krypton taking a little bit of damage as Devil goes down. AV and Future trying to clutch in the battle for his team, trying to get a few more points. It's a 2v2 situation out here, but little do they know, if they see right, if they see left, there will be players on all the sides as Aditya approaching from the hill. He might spot Future, he might spot AV, he might get both the kills with ease from that hill as Krypton gets instantly knocked. Rebel could go save him, but AV secures the kill. Aditya pushing on from the sidelines as Rebel is the sole survivor out there. Frost in the meanwhile holding the wall, just trying to be safe and sound. Bits of all this. There's Redex taking on Kings on the sidelines. There is Norman trying to fight down Alex and his friends. A lot is happening as we speak everywhere. We have Alex and his team securing the center of the circle. They are currently at the most safe place. Demigod and his team are on the hills of the snow. I hear a car coming in as Phoenix is pushing. Phoenix was pushing the opponents, but they get cornered as soon as they push him. Aditya takes down AV on the sidelines. A spray and pray from the vehicle. Phoenix gets knocked off a running car as Alex on the sideline. Phoenix is going to get instantly taken down as Alex on the sideline was trying to get some kills on the Demigod. Anand pushing in, going for kills, gets one, finishes one, instantly gets nailed. A lot happening in this battle. 4 teams alive, 7 players. Future X, Aditya, they are going to be in a 1v1 situation. Getting spotted. Future gets taken down by Aditya. 3 teams remaining, 6 players on the scoreline as Aditya is the sole person running to the circle, will be taken down. And guys, it's just 2 teams. It's 5 players remaining as Itachi takes a little bit of damage. 3 versus 2. The last zone is underway. And let's see, which team is eventually going to take
the chicken dinner. They are stuck. They are stuck. And right now, really low on health, and Nate going in, knocking down one. The other person has just 1 point in health, and the game comes to an end, guys, as winner chicken dinner. The match comes to an end with Vibs securing the chicken dinner. Points table eventually will be updated. You guys will know. But before that, where were we before this match started? हम किधर थे ये मैच चालू होने से पहले? We were right at this standing. अभी देखना पड़ेगा ये standing के बाद, Game 3 के बाद, which player, which team, who is going to be the one who gets ahead in the grand finals of the Battlefield Bloodbath. Just a few more players left. I mean, just one more game left, guys, for today. And we are going to see what happens next in this matchup. अगर कुछ भी technical issues होते हैं किसी को भी, you can contact the tournament organizer, the tournament management. They will be there to help you out as much as they can. So right now on the back end, points are being calculated, and हमें पता लग जाएगा कि क्या Red X Legacy अपना पहला पोजीशन सिक्योर करेंगे या फिर कोई और टीम आके उनसे आगे बढ़ जाएंगे. Vibes were at 8 points the last time we saw them, and this time they've got a chicken dinner. तो उधर ही 10 पॉइंट मिल गए हैं प्लस द किल्स. लेट्स सी वेयर दे रीच. क्या वो 25 के ऊपर जाएंगे या नहीं? विद द पोजीशन, विद द किल्स, टाइम विल टेल. Right now, one game away to figure out who will be at the end of, at the top of the table at the end of day 1. And यहाँ पे हर्षल कमीनापंती करते हुए, हमें पता है हर्षल क्या कर रहा है. वो कुछ बोल नहीं रहा है. हमें सब पता है, हमें सब पता है. हमें नहीं पता है कि क्या क्या डीएम हुआ है, पर हमें पता है कि कुछ ना कुछ हुआ है, और वही रिएक्शन में ये सब हो रहा है. आरपी पे फोकस करो भाई साहब. Exactly. आरपी मतलब तुम गेम प्ले में फोकस करो भाई साहब. वो सब चीजें करो तुम, मेरे खामोशी पे फोकस मत करो तुम, समझ रहे हो? ठीक है गाइस, हर्षल की खामोशी पे फोकस नहीं करेंगे. हम लोग फोकस करेंगे जो पॉइंट्स टेबल अपडेट होए जा रहा है. बट बिफोर वी गो टू दैट, वी विल बी टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक. Until then, you can take a look at the finalists, the point structure, you can look at the match schedule, you can look at everything. So we will be right back after a really short break. Until then, thank you for tuning in. Thank you everyone that has supported us throughout. Like and subscribe to get such great content every day of your life, and we will see you all really shortly.
Welcome back, ladies and gentlemen. Welcome back to the battlefield Bloodbath. Lobby has been created and we will be moving into the game really soon. Only 5 players have joined as of now, so धीरे-धीरे सारे players join करेंगे. But उससे पहले, the thing that you have been waiting for, let's take a look at अभी के लिए कौन number 1 है. Game 3 of day 1 of the grand finals has come to an end. We have 1 game left for today and multiple games lined up for tomorrow. ताकि हमें पता लगे कि ये टूर्नामेंट का विजेता कौन होगा. Who will be the winner of the battlefield bloodbath? So here are the points after game 3. We have RDX Legacy yet at number 1 with 42 points. We have 40N yet at number 2 with 35 points. Team Hunter climbing the ladder at 29 points. YB Sports at 29 points. Team Was Taken at 28 points. 4H at 25. Solid at 23. Akatsuki at 17 and rest to follow. Right now we have Team Hunters, YB Sports and Was Taken. These 3 people have secured 1 chicken dinner each. But तभी भी अगर तुम देख रहे हो, it is always not the chicken dinner that only matters. Position, kills, everything matters. As right now, the top 2 teams है, उनका एक भी chicken dinner नहीं हुआ है. They secured position, a decent position, and they secured multiple kills. And Red X Legacy ये एक टूर्नामेंट में मैच 1 से देख रहा हूँ कि वो किल के पीछे कितना भाग रहे हैं. अभी as soon as all the players join in to this lobby, हम लोग जाएंगे towards the last game of today, last game of day 1 of the battlefield bloodbath. अगर guys तुम लोग enjoy कर रहे हो, don't forget to like, don't forget to subscribe. Multiple casters थे, multiple tournament managers थे, organizers थे, जो बैठ के दिन रात मेहनत किए हैं to make this tournament happen just for you guys. तो यार just show them some love, show them some support, ताकि हम ऐसे और tournaments in the future कर पाए. एंड गाइस अगर कोई ऐसा इंसान है जो अभी ट्यून किए हैं, दिस इज गेम 3 का स्कोर बोर्ड जो करंटली दिख रहा है तुम्हें. एंड अगर बाय चांस कोई टीम्स है जिनका लो पॉइंट्स है, इफ दे वांट टू कम हायर ऑन द लीडर बोर्ड, उनको ये करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज द पॉइंट सिस्टम दैट इज किकिंग ऑफ इन दिस टूर्नामेंट. एंड अगर फर्स्ट प्लेस मिला, बंदे को 10 पॉइंट तो मिलेगा ही. अगर फर्स्ट प्लेस उनको मिला नेक्स्ट मैच में, उनको मिलेगा सीधा एरंगल में, विच इज़ माई फेवरेट मैप पर्सनली, क्योंकि मुझे एक ही मैप आता है पबजी में, BGMI में. डे 1 खत्म होते ही कल डे 2 होएगा एंड डे 2 के बाद देयर बी 1 टीम दैट सिक्योर्स देमसेल्फ अ टोटल प्राइस पूल ऑफ $15,000 which will be divided as the winner getting 6, the first runner up getting 3, second runner up getting 2, 4th position at 1,500, 5th position at 1,000, and the final person, the MVP, at a total of 1,000 rupees. And जो भी अभी आए हैं, whoever's tuned in, आज भी 18 teams are there. Tomorrow also, these 18 teams, the finalists, are going to showcase top tier performances to try to secure themselves cash prizes. तो गेम 4 की तरफ जाने से पहले once again this is your points table.
Alright guys, we will be kicking off with game number 4 very very soon. We already have 65 players in the lobby. There are only 7 more players left to go for the final match, which is game number 4, which is a wrangle of day 1 of Battlefield Bloodbath, guys. And this event is really going very interesting because जो अभी top 2 पे है, they haven't got a single chicken dinner. अभी तक एक भी chicken dinner ना लाते हुए भी they are still top 2 on the leaderboard. अभी time will tell कि day 1 के end पे क्या वो अपना जो leaderboard का standing है वो secure कर पाएंगे, क्या पता वो एक chicken dinner ले ले. Before we go into game number 4, the points table are on your screen as we speak. So you can take a look, guys. RedX Legacy and Team 40H 42 and 35 points respectively without a chicken dinner. And ये भी है कि कोई और टीम 30 के ऊपर है भी नहीं. जो third है and जो fourth है, they are currently at 29 points. And keeping this in mind, we are currently on our way into game number 4. We are on our way into a wrangle, and we'll be jumping into the plane in 5 seconds to determine who is going to lead the table of Battlefield's Bloodbath at the end of day 1. Loading in to the game as we speak. It's 1 game away, and then an entire day 2 will come your way with some more BGMI action. अभी ये आएगा गाइस, स्टार्टिंग में वो डिस्क्लेमर आएगा ही जो तुम्हें सुनाई देगा, वो सुन लो and we will continue. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Currently लोग connect कर रहे हैं into the map. The timer countdown will soon start, and soon we will know what is going to be the plain path of map number 4. इसके बाद guys कहीं नहीं जाना because there are going to be 2 more things. One thing is you are going to know the points table on this stream itself. And जो भी tuner है, don't worry. After this game we are going to head into GTA 5 RP like you always want. The buzzer has been pulled in. The plain path has come in. From military all the way to Severny, we are going to see a plane travel. We're going to see people land into multiple places. देखते हैं guys, which are there going to be any hot drops? Are there going to be any drop clashes? देखते हैं. The plane has started. Military is going to be the first place where we are going to see a couple of teams maybe drop off if they really tend to. Kings instantly jumping as soon as they could. They might be the only team that goes behind the military area. Red X in the meanwhile, the team that is on the top of the list, taking control of military base, or at least the outskirts. Multiple teams are going to now drop as we have crossed the river pathway. The river pathway, plane reaching 50% of its journey, moving up, passing school, and everybody is getting spread out. The question is, will we see any clashes? Red X in the meanwhile, they actually jumped there but are eventually moving towards Primorsk. Quite interesting. And the circle, tailing around Severny, tailing around Rozhok, Gadka, all these places. 2 teams in Pochinki. But what's interesting is there going to be a drop clash out here? Because around school, around apartments, there are already people landing in. We have this guy holding a pistol, picking up some more people. Jotin and team on the meanwhile, trying to shoot him down. They have pistols, they don't have really any high equipment guns, and a drop clash coming instantly at the side of apartments. They are trying to loot in guns, they're trying to get in as much as possible because this drop clash can be very costly for the squad that falls down. The first fight of this game is already underway. Being safe, looting away while this fight is underway. Are any teams that close to each other for a fight? They're looting around. Teams are safe. No one is really in for a clash.
There could be one out here with Joker and Quarry's team. There could be one at Yasna. But the closest battle that might take place is the one which we are looking at as we speak. No team is going to make any hasty decisions. They are playing safe. They are not really looting that freely. In the meanwhile, Gyro God taking down Divine. Where is this happening? Wait a second. There is a combat happening while people were driving around. We have Road and his team. They did shoot down a person. They did get a kill. And unfortunately, Team WT, they are one man down. Are they going to take a risk? They are getting tailed. Drive-by has been initiated. क्या ये drive-by on foot में convert होगा? Time बताएगा. देखो guys, ये बस मेरा. drive-by होएगा. And right now, Doxy and God are waiting at the ridge. They are getting pushed. One guy's on foot. उनको पता नहीं है ये. Will Team WT take an early exit? Swaraj going really low. 1% down. Sparks on the side. Also low. Gyro God and Rohit. Two people. The only sole survivors hiding behind the ridge. Gets taken down. Is a team wipe going to be coming in as Gyro God is the only person alive from FNT currently. Oh, the last game. Well played, guys. They have secured a chicken dinner and they do secure an early squad wipe as team was taken. Have taken down an entire squad. In the meanwhile, looking back at school, we have Raghav and his team. One of his players, Berlin Bichara, he has DC'd. I'm not currently sure whether वो DC होके मतलब मर के DC हो गया कि जिंदा होके DC हो गया, but there's still 4 people on the opposite team. He is holding a bush as we speak. Are there any fights happening anywhere? There is a lot being looted. People at Yasna are fairly close, but not really in the midst of a battlefield. Teams are being secure. Teams are being safe. They are not taking any hasty moves. Jatin, in the meanwhile, using a smoke, just trying to get a pathway, trying to make some way to move to the next building. Dheere dheere साथ में आगे जाके, they're going to figure out ways to make something happen. In the meanwhile, out here, I don't know how to pronounce this guy's name. But still, he is holding angles and trying to spray just to get some information. Raghav, through the window, holding a slight right side angle, trying to see if he sees Sahil or he sees Mental's OC on the other side. But unfortunately, they are in a stalemate right now. Nobody is really taking any aggressive moves. AV and Joker, they are taking cars. They are moving right now. Little do they know that there are people in Savani. But they are not going there. They are going to play this game for the circle. They are going deep into the zone as Team WT are also there. In the meanwhile, Frost is working towards Gentleman. And is there something going to happen here? Is there any gunfight? Nah, it's all safe. The closest a gunfight can happen is between Raghav's team and AK's team, as Raghav is rushing into a house. He's currently trying to look at every angle, trying to see if it's clear. Raghav, Mental, both in the same house. It's going to be bloodbath time. He does break the door open, does ruin a little bit of cover for Mental. And right now, 2 people are DC. Raghav and the other guy are only alive. He does throw a molly. Raghav clocking onto his nade. Throws in a nade. It might just destroy this guy, but no, he goes to the right side. Raghav trying to find a different way, but unfortunately it's a 2 versus 4 as a lot of disconnects have taken place, but the other team does not know about these disconnects. A push is coming in. Raghav going from the back lines. He spots one. He goes for the spray. Gets a little damage. Unfortunately gets knocked. In the meanwhile, Maz, he has reconnected. 1 more person knocked. Maz, the sole survivor of his team right now, as Berlin is yet DC'd. So out here is more or less a squad wipe that has taken place. In the meanwhile, what else is happening around the map? People are looting. Zones are closing. Joker and Joker's team and God's team, they are closing into each other. Currently, people are just looting their way to glory, being a little bit safe. But during the safety, who is going to be the one that approaches somebody else? The map's at a distance. Loot is underway. Mars is back. He knows that he's a sole survivor. Is he going to go and try to get a couple of kills? He has a shotgun to his name. He's going to get pushed. He's going to get pushed really, really badly.
But will he get a couple of kills in that push is the question. The Molotov coming in, burning him away, leaving him at just 1 point in health. 1 point in health, that's all that Maz has left to fight. Using a bandage, but a nade coming in, securing that kill on Maz, putting an end to that team. The circle closing in, guys. Teams are very far away from each other. Vibes, the team that got chickened in the last game, are completely in the zone looting. Red X are also completely in the zone looting. Nobody's taking any risky moves. It is the final game of day 1 and people do want to have a slightly higher confidence boost. They want to be higher on the table ताकि यार वो confidence के साथ वो day 2 में full motivation के साथ आ जाए. The teams that are on the lower side of the bracket might face some difficulty, but in the meanwhile, we see out here Divine and his team. Is he going to walk into Team WT? Is he going to walk into Devil's team? Time will tell as to the pathway he currently chooses. They have found another car. They have switched directions. Right now the map is all I'm going to look at until I see anyone coming in close, because I do not see fights happening very soon. Rango and his team, they might get spotted. They might know where the opponents are. They might have got some information. They might really be at the edge of the blue zone. In the meanwhile, cars approaching each other. Is Rango and his team going to spot his counterparts, Lucky and his team, who are both roaming around in cars? They're trying to get some positional advantage, but I think a chase is going to begin soon. As right now, Rango, Ninja and one more player in his team are securing some safety. In the meanwhile, they are in 3 different vehicles, trying to scoot, trying to move towards Team WT. Team WT currently on foot, holding the petrol pump, holding the edge of the circle, ready to take down anyone that comes in. But here, inside the zone, at the blue zone, a fight comes underway. Quadri and Spectre. Spectre takes a fall. Quadri in the meanwhile, inside a house. Unfortunately, he's inside the blue zone. I'm not sure if he has any place which he can see. In the meanwhile, Ishwang saw Quadri. Hyper, 3 people inside the blue zone, trying to figure out. Ishwang takes a fall from Cypher, who instantly sprays him, but they are at such an angle where he can be instantly revived, so I don't think they have really much to worry about. Spartan and his team trying to figure out some side angle, trying to figure out a flank where they can really take them down, entering the blue zone, exiting once again, thinking of being safe as well as advantages and positional. While this all is happening, guys, a lot of teams are yet just leaving military base. Next fight is probably going to be around here, as that is danger zone. But danger zone ke pehle, Ishwank, he's inside the blue zone. He's getting damage. Usko pata hai ki bande kidhar hai, but can he do anything about it? People are approaching each other. Loot has been taken, and right now there might be another clash as Team 15, Rango's team, is very close to what's taken. Slowly there are yet a lot of teams alive. A total of 15 teams as the circle is also closing in. And here is going to be fire as a few shots taken on one of the players of Team 15. He's going to bandage up and make his way to safety. Running away was taken. Deoxy and his friends are holding in high angles, trying to figure out places in which they can easily get some kills. They are into their cars, trying to secure some more positional advantage because they are currently at the edge of the circle. In the meanwhile, Krypton and his friends inside the zone, trying to find a way to really get to safety. They are getting shot on as well. Why, as Deoxy taking on a fight, Rango does go down. Deoxy down as well. God and Paragod both are going towards helping him. The car Paragod coming in towards Deoxy, trying to help him down. Jumps off the vehicle, trying to get into cover, throwing in the smoke just so that there is some safety parameters for them to go down. Spots out Ninja, goes for the spray, gets
so much damage onto him. God, securing the kill as one more kill coming out and through the car. Team WT squad wiping already have 7 finishes to their name. Chaos taking place in all actions as we can see a massive fight happening with Jatin around here. Jatin and his team are moving in, shooting away, taking down rebels. He takes down one, a Molotov into the way. He's getting chipped off from multiple angles. Might walk into the Molotov, but has no place to run. Instantly gets taken down. So much chaos, guys. So much chaos. As Rakesh just holds an angle. But here, everyone is going towards this drop and everyone is closing in. There's fights happening everywhere, guys. Har jagah kuch na kuch ladai ho raha hai as Rebel is on the floor. Krypton, the only sole survivor. Usko pata hai samne bande hai, but he can't do anything about it. The zone is also approaching. The last game chicken dinner winners vibes. Can they do something to secure themselves outside this zone? Meanwhile, Devil taking down Cypher at some other part of the map with so much happening. Let's go to the north of the map as Quadri is in the water. 2 of his teammates are down. Hyper is also in the water. And here we have the opponent team, AV and friends, trying to find out the water, trying to secure the kill. Sees Hyper, gets 1 kill, and Quadri will also fall really soon as he is the sole survivor out there. Corey takes a fall. Another squad wipe coming in. People are closing to the circle, guys. And this circle is chota hoye ja raha hai. And there's so many teams alive. There's so many players alive. What is happening in this last zone? Vibes with their vehicles, trying to see where they can go to get some advantage. Guys, there's going to be bloodbath everywhere. Divine and his team holding the house, trying to get a couple of kills. Vic also looking from the house, he spots 1, goes for the spray, but unfortunately no bullets connect at that point in time. He has a 360 view around his area. Pain killing off Danger on the sidelines. Spartan with a ghillie suit to his name. There's a fight happening somewhere, guys, and I am not sure where. Going in straight into the fight is Ishwang into a house, trying to secure some spaces out there. Spartan with the ghillie suit. Killer Smith on the sidelines in a vehicle. There is so much happening, guys. There's so much happening. Lucky in the meanwhile, trying to find a way to secure safety. He is using a first aid, sits on the car, gets off. At one point in health, he finds another vehicle, trying to get some safety. Sorry, guys, no bullets connected as he's applying some bandages and running away. There are people lucky at one point in hell. Gus go down. There's Jignesh in the smoke. Aditya in a vehicle, trying to find places to just be secure. Vibes going in for some kills. Alex gets down 1. Clocks in a nade. Chucks it towards Jignesh. The nade might not connect onto anyone. Vehicles are roaming around in the smoke. Itachi, Hiru, trying to find some people. Sprays coming in, and in the end, out here, spraying through the smoke. There is Jignesh out there. He is knocked. Shots fired as Jignesh now is knocked. 1 point in health, will go down. Sprays coming in, and that's all that was required to take down Jignesh. In the meanwhile, Alex might make some cover with some smoke. He knows there are more people in front of him. He wants to get some more kills, but can he do that? As one team out here, the green team, is getting surrounded completely into one shack. Spartan takes down 1 on the sidelines. Spartan finishes 1 more. Currently, guys, the circle is closing in and teams are just going ham on each other. There's a lot of mayhem. Krypton seeing Saurabh, spraying him down, taking him down instantly. It's only Krypton, it's only Rebel alive. He spots 1 more, gonna go for the spray, gets 1 bullet off. Rebel in the meanwhile trying to provide him some assistance. MVP getting a kill, Pain getting a kill. Fights are happening each and everywhere. As now we're going to look at what Kings is up to.
Smokes have been put in. They are very, very close to each other. Are they going towards the drop? There's a burning vehicle. He does get really hit and running away, but he's leaving his team behind. Farhan Kings making a move. MVP is currently knocked, slamming into the building, but slamming into their own death as Kings is still surviving with only Rebel and Krypton there. A nade which can be really wonderful only if it was sent their way, but they do get saved into glory. In the meantime, we have AV, the sole survivor, shooting away onto Divine. Can he get a knockout there? His position has been revealed, holding the edge of the circle, still sees Divine, gets a knock, will secure the finish as he needs points for his team. The secure has been given by Divine. He sees one more, going for the spray, getting a little bit of damage onto him. AV, the only survivor of his team. Is he going to take a risk? No, he's not. He's going to play safe. He does not want to be sorry. Teams are yet approaching each other. Everyone is at a slight distance now. सबको थोड़ा सा breathing space मिल गया है except Volt. Except AV, because AV right now, he has to look around at every angle. He is the only one alive and has to play for position. But will AV be met by Anand as Anand is roaming around in a vehicle just trying to figure out a way inside the zone? The issue with AV's position is अभी वो zone के बाहर है and zone के बाहर कुछ भी हो सकता है. But यहाँ पे अगर by chance AV के सामने वाले लोग और ये लोग लड़ लिए, AV can third party escape from here. Demigod and his team casually go into the circle. Gets spotted by Krypton. Krypton with a spray on Anand. Unfortunately misses. Rebel in the meanwhile spraying at Anand as well, missing as well. There's a lot of cars here. Rebel Pain going up the hill. Anand getting down to really low with his health. Turns around, sprays on Ishwag. Ishwag at 1 HP, but Anand goes down. Will he be finished here? Anand is instantly finished as Reflex Pain gets off his vehicle, tries to get some cover, might throw some smokes out here, but a lot of damage. They are getting fired from each and every angle. Demigod in the meanwhile also behind the car. Smokes are in place, and right now all of them are trying to figure out what to do. Rebel in the meanwhile smoking and hitting from the apartments, using his scope, trying to get a couple of kills. We are moving towards the last circle very soon, as there is a lot of bloodbath. AV in the meanwhile is yet alive, trying to make his way into the circle. Bullets are being sprayed from everywhere. 3x Rebel coming in, getting no damage onto anyone. Might just spot some more people. I'm not sure if he spotted the green team or not, but he knows that he's surrounded. He knows there are people all around him. In the meanwhile, the circle closing in. A very small circle coming through. Shots are being fired as Vibes in the center of the circle, waiting for that drop to come in. Hiding behind the buggy, holding angles, securing the circle as PasKaLL knows there are people around him, but decides to scoot away to safety. Decides that we are slowly climbing the leaderboard. Let's get there on the top. And we have out here Vibs Hero taking on Norman. They know the position. I think he can see his foot. Maybe, no, he can't. A very small angle, but I am not aware about positional advantage out here. Whereas PasKaLL with 5 kills to his name is looking for another flag, is going in, trying to spot people and trying to get another kill. He spots one, goes for the spray, 1 HP, needed one more bullet to connect, but unfortunately that does not, so he chucks a smoke and tries to go back to safety. His team coming in to instantly back him up, as in the meanwhile, we have AV running into the midst of another battle all alone. Will he be alive in that battle? Goes for a spray. Unfortunately, nothing connecting on Soumya out there. Fights have been taking place in every angle, ladies and gentlemen. And now, we are going to see what happens. PasKaLL taking down another kill. They're coming into the zone and are getting shot from every angle as PasKaLL, Vibes, both their teams have unfortunately cornered no man. Alex goes down in the meanwhile, and Deoxy pushing onto Alex, pushing onto the knocked person with his friend PasKaLL. They will secure this kill. Norman dying to the zone. Alex currently down. Hero going down on the side, and the zone has approached.
6 teams remaining, ladies and gentlemen. 18 players alive. And right now we are approaching the last circle. PasKaLL takes down one more kill. PasKaLL, this game is on goddamn fire. Vibes in the end, in the midst, goes down by Deoxy. How many kills are they getting? Right now they have a lot of kills back to their name. But gentleman, OP and his team inside the zone in a 4v4 matchup. This last zone gonna be very intense. 5 teams remaining, ladies and gentlemen. 15 players up alive. Vic taking some shots on the side. PasKaLL with another knock on W, gentlemen. He instantly finishes him out. 13 players alive. I wonder how many kills is PasKaLL gonna get this game. They are pushing into the circle from the sidelines. They are going to see more and more people are getting a little bit of damage onto them, but they are safe and secure. 5 teams, 13 players. Damage is happening everywhere around. Only Pyrex and Blade I will not lose. Currently y'all are cornered. Currently you're in the middle of everybody as y'all are getting pushed by PasKaLL. PasKaLL walking in, jumping out of the car. Another kill. PasKaLL, what's going on with you? You're wiping the entire server. Blade IW NL inside the smoke, trying to pull off some damage. But PasKaLL looking on his right, trying to shoot someone down there as well. 5 teams, 12 players remaining. Spartan at the car, taking some cover. Anything can happen, guys. Only 11 players. A nade being chucked as Vic takes down Deoxy. Deoxy falls down. PasKaLL, the sole survivor. Blade on his left. 5 teams, 10 players. The biggest advantage are for the team green. Have 3 players alive. It's 3 versus 1 versus, I mean, unfortunately, 1. It's 2. Okay, team WTF yet 2 players alive. So it's 2, 1, 3, 1 and 2, I think. PasKaLL inside the smoke. 1v1 is there. Go away. Spartan hugging the circle, coming in. We can look at a distance of what all is happening. Smoke pathways are being made. There is a molly in front of Blade. Does he know that? Can he push through the smoke? A drop coming as Ishwang takes down Krypton. Instantly finishes him, making Rebel the only survivor in that team. 3 versus 2 as PasKaLL gets taken down by Blade. He is trying to finish him. God tries to help him out, but God is also now at only 1 point in health. He does need to heal, but the zone is coming in. Has to take the fight. Instantly takes down God. Instantly gets taken down by Vic on the sideline. 2 teams remaining. It's 3 versus 2. Yes, acha, abhi dikh gaya dono. Vic takes a fall. In the meanwhile, Spartan and Ishwang takes a fall as well. It's Spartan versus 2 people. 1v1. It's 1v1. It's a 1v1. Spartan versus Frost. Spartan versus Frost. Who's going to take it out? And Spartan gives the winning blow. Winner, chicken dinner. And that takes us to the end of game number 4, ladies and gentlemen. And right now, after game number 4, we're going to give some time to know who is on the top of the table. Spartan, all I can say is got goddamn 8 kills this game. I have got some information, guys, from the tournament organizers. And अगर वो issue है, तो some things might change. क्या पता? The destiny of this map changes. क्या पता? Anything can happen, guys. क्या पता? Who knows? Apparently, guys, there was some issue in relation to
सर्वर लैग, और वो सर्वर लैग की वजह से there might be a chance to rehost. So now what's going to happen is we are going to take a short break, and या तो हम तुम्हें rehost का बताएंगे या तो हम तुम्हें updated points table का बताएंगे. So stay tuned. I will go get myself a bottle of water, maybe something to slightly eat, क्योंकि ये लंबा चल रहा है and मुझे थोड़ा सा भूख भी लगा है. तो yep, tune in guys, and we'll be back soon. I mean, stay tuned guys, and we'll be back soon.
ऑलराइट गाइस, सबके लिए बात है, जो भी डिसीजन आएगा या तो ऑप्शनल होगा या तो कल पता लग जाएगा, ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय डिस्कॉर्ड. विल सी यू ऑन द नेक्स्ट स्ट्रीम, इज गोइंग टू बी GTA 5 RP. चलो गाइस, मिलते हैं गाइस थोड़े टाइम में.